बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ सामीन जो हमारे साथ यहाँ पर और वर्चुअली मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं तैयबा सलीम आज के वेबिनार में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह ज़िलज़ाल। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकालकर बाहर डाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा ये इसको क्या हो रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी। बिअन्न रब्बक औहा लहा, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस रोज लोग गिरोह दर गिरोह पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फिर जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, और जिसने जरा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी सीट से खड़े हो जाएं। आज का ये वेबिनार चेयरमैन नेप्रा के खास इकदाम पावर विद सिक्योरिटी के तहत मुनक्किद किया गया है। नेप्रा साइबर सिक्योरिटी ओटी आईटी रेगुलेशन अप्रूव हो चुकी हैं और फोकल पर्सन के नॉमिनेशन और आगाही के मकसद के तहत वेबिनार्स का सिलसिला जारी है। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी रज़ी फारूकी साहब को, जो के इलेक्ट्रिक में हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। आप आए। सॉरी, मैं दावत देना चाहूंगी अमार जाफरी साहब को, जिनका 40 साल का गवर्नेंस, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी का तजर्बा है।
आप फॉर्मर एडिशनल DG/FIA और NR3C के हेड रह चुके हैं। काइंडली आप तशरीफ लाएं और आज के मौजू पर अपनी ब्रीफिंग दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मार जाफरी है। बहुत शुक्रिया पैमरा, चेयरमैन पैमरा का, आई एम सॉरी नेपरा, क्योंकि कल मीटिंग हमारी पैमरा के साथ थी, चेयरमैन नेपरा का और आपकी पूरी टीम का, टेक्निकल टीम का खास तौर पे जिन्होंने हमें इसमें मदद किया। अच्छा जी, आज की जो स्टार्ट है अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सर्ट के हवाले से है कि सर्ट क्या है, कैसे काम करती है। जो आपकी सेक्टोरियल लेवल सर्ट है वो आपके हेडक्वार्टर में बन रही है माशाल्लाह, और हम बड़े मशकूर हैं चेयरमैन नेपरा साहब के, उन्होंने हमें ये कहा है कि इसके ऊपर हम काम कर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आपकी सेक्टोरियल सर्ट है वो तमाम जो अपने आपकी चीज़ें हैं, जो लाइसेंसेस हैं वो सब अपनी अपनी सर्ट बनाएंगे। ये निज़ाम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके दो हिस्से होंगे। पहले मैं बात करूंगा, फिर मेरे बाद जो हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वही सब वो बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज की बात के, कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाई वी नीड टू सेट अप सर्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्यों आप क्यों गए, एक मतलब पावर सप्लायर है वो क्यों ये सर्ट को इस्टेब्लिश करे। उसके बाद हमने देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि हाउ टू सेट अप अ सर्ट, कैसे करनी है। इंशाल्लाह हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे फंक्शनल। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये काम, आपको इल्म होगा कि मैं रिटायर्ड एडिशनल DG हूँ FIA का, और जो आपका ये विंग है FIA का साइबर विंग, उसको मैंने, आई एम फाउंडिंग हेड ऑफ दैट विंग। और उस दौरान भी, रिटायरमेंट के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया की तमाम जो बड़ी सर्ट्स का काम कर रहा हूँ। और 14 तारीख को इंशाल्लाह चाइना सर्ट के साथ एक बहुत बड़ा इवेंट है, हम लिंक भेज देंगे, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका टॉपिक ये है, इसलिए इस तमाम कोई ऑलमोस्ट 20 साल का तजर्बा है मेरा सर्ट्स पे काम करने का। तो मुझे मुकम्मल यकीन है खुदा की ज़ात से कि आपकी जितनी भी सर्ट्स बनेगी वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक बनेगी। अब हमें डिफाइन करना है कि सर्ट की सर्विसेज क्या होंगी और ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है वो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, उसकी जो है सिस्टम कैसे काम करेगा। टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम इंप्लीमेंट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्ट के अंदर भी और आपकी सेक्टोरियल सर्ट के अंदर भी। नेक्स्ट प्लीज। अब सवाल ये पैदा होता है आपको सर्ट की क्या जरूरत है। बड़े सादा अल्फाज में बताऊं कि जितनी आपके सोल्यूशन है, सीम है, सौर है, सॉक है, जितनी चीजें चल रही है वो सब चलती रहेंगी। ये एक ऐसी चीज होगी जो बाहरी दुनिया से रब्ता रखेगी, दुनिया से रब्ता रखेगी, अपने मुल्क की नेशनल सर्ट से रब्ता रखेगी, और बाकी जो इदारे हैं उनकी सेक्टोरियल सर्ट से रब्ता रखेगी। ये एक सादा मिसाल के लिए घर के चौकीदार की तरह है। चौकीदार बाहर खड़ा होता है, अंदर आपकी जो भी चीजें महफूज आप करें अपनी जगह, चौकीदार का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चौकीदार गली को देख रहा है, शहर को देख रहा है, उस तक मालूमात आ रही है। किसी इमरजेंसी में रात को 2 बजे उठा सकता है आपको कि जी ये गली में इमरजेंसी होगी, चेक करें क्या हो रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इसकी क्यों सर्ट की जरूरत है। इसलिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिक्योरिटी इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये इतनी तेजी से यानी कि इसकी इंक्रीज हो रही है इसके ऊपर कि इफेक्ट कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनलिटी को। आपका इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैं इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूँ। खुदा ना खास्ता कोई अगर मसला हो इसके सिस्टम के अंदर तो पूरा मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है विच इनकैपेसिटेट द फंक्शनलिटी ऑफ द कंट्री, यानी पूरा मुल्क रुक जाता है उसके ऊपर। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हमें उसी तरीके देखना चाहिए। इसमें आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये तमाम चीजें जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसके ऊपर बाकायदा इसकी चेक लिस्ट होती है कि सर्ट ने क्या देखना है और वो सर्ट से कैसे रिस्पॉन्ड करेगी।
उसके अलावा जो आपके नए लॉज हैं, आपके जो रेगुलेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और उसके लिए हम प्रोएक्टिव काम करेंगे। कहते हैं यू हैव टू बी अहेड ऑफ कर्व, यू हैव टू बी अहेड ऑफ टाइड। यानी ये नहीं है कि जब मसला हो गया तो आप सोचने बैठे जाएंगे। हमें पहले पता हो कि दुनिया में किस मुल्क के अंदर पावर सेक्टर को हिट कर रहे हैं क्रिमिनल्स, किस तरह कर रहे हैं, क्या तरीकाकार है उसका, ताकि खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास कोई मसला आता है तो हमें उसके पहले से पता हो। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके ऊपर अब IoTs लग रही हैं। IoTs क्या है? ये एडिशनल डिवाइसेस हैं। आपने देखा होगा ये जो अभी रिसेंट वाकये हुए 2-4 सिक्योरिटी ब्रीच के, तो उसमें पता ये लगा है कि वहाँ के एसीज के अंदर IoT फिट थी। अच्छा, वो फिट आती हैं, लिखा होता है IoT एनेबल्ड, वो लगाते हैं इसलिए कंपनी वाले, अगर आपके कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो अगर आपने टेम्परेचर उसको मतलब 20 पे रखा हुआ है तो एकदम वहां पे आ जाते हैं, 40 लोग आ जाते हैं तो एकदम डाउन होके 16 पे चला जाएगा। और ये काम सेंसर्स करते हैं उसके। लेकिन अगर कोई उसको हैक कर ले, पूरे निज़ाम को, उसके सर्वर को हैक कर ले और वो उसी डिवाइस को कह दे कि जी अब जरा बताओ ये बात क्या हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो नई नई चीजें आ रही हैं आपके सिस्टम के अंदर उनको भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसकी रिक्वायरमेंट सर्ट की क्या है ये देखना पड़ेगा हमें कि ऑथराइजेशन है। एक तो पहली बात ये है भाई ये मैंडेटरी है, क्योंकि नेशनल सर्ट इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आने वाली है। उसके ऊपर जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है उसमें लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज पार्ट ऑफ दैट आल्सो। उसके बाद वो ज़ाहिर PM सेक्रेटरीट से इशू हुई थी कुछ दिन पहले। उसके बाद अब नेशनल सर्ट इन प्लेस हो चुकी है, अब उसकी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रही है। ये चंद हफ्तों की बात रह गई है, मेरे ख्याल ये 2-4 माह की बात रह गई है। उसके बाद सेक्टोरियल सर्ट्स हैं। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क का इतना क्रिटिकल सेटअप है ये, तो इसको हम मतलब कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके। मैं रिक्वेस्ट किया आप चेयरमैन नेप्रा से कि वो एज ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको लेके चलें और इंशाल्लाह ये जरूर हो जाएगी। ये आपकी एक बेसिक मीटिंग है आज की। इसके बाद देयर बी सीरीज ऑफ मीटिंग नेक्स्ट वीक्स के अंदर हम लेके चलेंगे और इसको हम डे टू डे बेसिस पे करेंगे। फिर हमने देखना है कि आपका स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक स्ट्रेटेजिक प्लान। सबसे पहले आपकी सेक्टोरियल सर्ट बनेगी नेप्रा हेडक्वार्टर के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ ये शेयर करने में कि जो आपकी IT की टीम है दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, उनके साथ मिलकर हम बड़ी आसानी चल सकते हैं आगे। फिर हमने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट सर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इसका विजन डिफाइन करना है कि आपकी सर्ट का विजन क्या होगा। कुछ कॉमन होंगे, कुछ स्पेसिफिक होंगे इसके अंदर। फिर हमने देखना है कि आपकी ऑपरेशनल प्लान्स क्या है, क्योंकि दुनिया का तरीका ये है कि पहले आप एक विजन बनाते हैं, फिर स्ट्रेटजी बनती है, फिर आपके SOPs बनते हैं, फिर स्टेप बनते हैं। ठीक है। हमने जो आपकी सर्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसको डिस्कस करना है। फिर हमने इसको अनाउंस करना है बकायदा। जब हम आपकी सर्ट को ग्लोबली अनाउंस करेंगे नेटवर्क के ऊपर तो नन एवरीबॉडी विल नो। फॉर एग्जाम्पल इसकी फायदा ये होगा, करंटली मैं इस वक्त तकरीबन कोई दुनिया की 8 जो ग्लोबल सर्ट्स उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो जैसे AP सर्ट है, JP सर्ट है, OIC सर्ट है, अफ्रीकन सर्ट है, हम सब के साथ आपको अनाउंस कर देंगे कि जी ये पाकिस्तान की पावर सेक्टर की सर्ट है। तो उन तमाम मुल्कों में जो भी इशू आएगा पावर के, वो आपको फौरन इन्फॉर्म किया जाएगा, वो इन्फॉर्म करेंगे आपको। इसमें सबसे बड़ा इशू होता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का। देखिए, अगर आप दुनिया से इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करेंगे, दुनिया भी आपसे नहीं करेगी। इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की 2 लेयर्स होती है। एक तो अगर किसी लाइसेंसिंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या वो अपनी सेक्टोरियल सर्ट को इन्फॉर्म करता है कि नहीं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन नेप्रा को कि वो इसके ऊपर बाकायदा कवानीन वाजे करें कि वो लाजमी इन्फॉर्म करें। फिर वो उनका फैसला है कि वो आगे कैसे इसको लेके चलते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस को हमें बड़ा ग्रेजुअली एवेल्यूएट करना पड़ेगा। शुरू के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि मंथली बेसिस पे किया जाए कि किस जो लाइसेंसी हैं हमारे उसकी किस सर्ट की क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या कर रहे हैं इसके। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब देखना ये है कि हाउ टू एस्टेब्लिश अ सर्ट। यहाँ से आगे अब वही साहब लेके चलेंगे चीज़ों को। मैं ब्रॉडली बता दूं आपको, मैंने आपसे कहा है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको चीज़ों का पता होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वही साहब जो अभी टेक ओवर करेंगे ही CISSP जो है वो एक गोल्डन सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी की। 10 साल से ये हमारे साथ है। ये हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। इनके अंदर एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है जो ब्लू एरिया ऑफिस के अंदर होती है। ओवर टू यू भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सिक्योरिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे कोलीग भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहीम साहब अनफॉर्चुनेटली उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके हमें।
तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि एस्टेब्लिश कैसे की जाती है सर्ट। तो इनफैक्ट 4 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए कोई भी सर्ट एस्टेब्लिश की जाती है। इसमें कि सबसे पहला स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट, फिर असेसमेंट, तो सेकंड स्टेप में डिज़ाइन किया जाता है, थर्ड स्टेप में उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, और फोर्थ स्टेप में उसकी इन्हांसमेंट्स, जिसमें कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है या उसके ऑपरेशनल इन्हांसमेंट्स हैं, वो परफॉर्म की जाती है। तो हम देखते हैं कि वन बाय वन की एक्चुअली स्टेप्स हैं क्या। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जांपल जो रेगुलेटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, सेक्टोरियल सर्ट्स जिन्होंने बनानी है उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल सर्ट्स हैं उनकी कुछ और हैं, आप पावर सेक्टर के लोग हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, बैंकिंग सेक्टर्स की कुछ और हैं। तो इस सारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आमतौर के ऊपर वर्कशॉप्स करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 डेज वर्कशॉप, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताएं कि आप क्या सिस्टम या बिजनेस ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है और उनकी डिपेंडेंसीज किस तरह से हैं, और उन की कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आप एक ऐसी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं कि जिसमें आप अपनी डिफाइन करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली ये होंगी और जिसको कि हमने आगे अचीव करना है। अच्छा, इसमें असेसमेंट के दौरान ही हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि हम सर्ट को किस फ्रेमवर्क के अंडर जो है ना वो लेकर आएँगे, या कौन-सा फ्रेमवर्क फ़ॉलो करेंगे, या अपना कोई फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ज़रूर देखा जाता है, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स देखे जाते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस देखी जाती हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जो है इसकी प्लानिंग करते हैं। मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इसी स्टेज में डिफाइन कर दिए जाते हैं कि हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं अपनी सर्ट एस्टेब्लिश करने के बाद। फिर फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फंडिंग इनफ होनी चाहिए जिसके लिए आप डेफिनेटली आप इन हाउस फंडिंग जनरेट कर सकते हैं, या आप लोगों के केस में कुछ ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट से फंडिंग लेंगे। सर्ट की लोकेशन क्या होगी, फिजिकल लोकेशन क्या होगी। डेफिनेटली कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि सर्ट्स को अपने पास एस्टेब्लिश करना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या करते हैं कि आउटसोर्स कर देती हैं या किसी थर्ड पार्टी लोकेशन के ऊपर उसके होस्ट करती हैं, या सर्ट एज अ सर्विस कहीं से हायर कर लेती हैं। लेकिन आप लोगों के केस में आई एम श्योर कि आप लोग सारे इंटरेस्टेड होंगे कि इन हाउस जो है सर्ट एस्टेब्लिश की जाए, स्पेशली जो नेप्रा एज अ सेक्टोरियल सर्ट है। स्टाफ कहाँ से आएगा, टीम जो है उनकी स्किल सेट कैसे इंप्रूव करेंगे, प्रोसेसेस क्या डिफाइन करेंगे, ये सारी असेसमेंट के अंदर हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। सेकंड स्टेप है इसका डिज़ाइन। बेस्ड ऑन द असेसमेंट आप डिज़ाइन इसको करेंगे सर्ट को कि इसका सर्ट का लेवल क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो सेक्टोरल सर्ट है उसके किसी और तरह से डिज़ाइन बनेगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्ट्स हैं उसके किसी और तरह से डिज़ाइन बनेंगे। सर्विस मॉडल क्या फॉलो किया जाएगा, वर्क फ्लोज क्या होंगे, प्रोसेसेस क्या होंगे, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स कौन से फॉलो किए जाएंगे, एसओपीज किस तरह से बनेंगे, और कहाँ से अप्रूवल्स वगैरह आएंगी, और जो सर्ट को कहाँ किस प्रेमिसेस में आप होस्ट करेंगे उसको डिज़ाइन किया जाता है। हायरिंग कितने लोगों की होगी, उनका स्किल सेट क्या होगा, स्किल सेट डेवलप किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस स्टेप में डिफाइन कर देंगे। थर्ड स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट। जो हमने डिज़ाइन प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से हम लोग सर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक हमने चीज़ डिफाइन की कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रेमिसेस चाहिए, हो सकता है कि आपको सीम सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए हों, लाइक सौर सॉल्यूशन चाहिए हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसी हार्डवेयर चाहिए हो सकता है जो करंटली आपके पास नहीं है, तो आपको वो बाय करना है। प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ योर टीम। आमतौर के ऊपर जो आईटी स्टाफ है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टाफ है वो पर्टिकुलरली अगर सर्ट के ऊपर उसने पहले काम नहीं किया तो डेफिनेटली उसको ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो पता चले कि सर्ट कैसे काम करती है और उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। और इसके बाद हम इसको जो ऑपरेशंस है ना वो एस्टेब्लिश करते हैं और उसको एक फंक्शनल ऑर्डर में लेकर आते हैं, और उसको ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए बनाई है उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। फोर्थ स्टेप है वो इन्हांसमेंट का है। आपने एक दफ़ा सर्ट एस्टेब्लिश कर ली है तो आपने इसकी जो फ्रूट है वो रीप करना है। आपका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कि आप कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के केस में ये हो सकता है कि जैसे यूक्रेन के अंदर पावर सेक्टर के एक अटैक्स वगैरह आए थे, तो वो सिचुएशनल अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा कि वहाँ पे अगर इस तरह से हुआ तो डेफिनेटली आपके पास भी वो अटैक आ सकता है। तो आप पहले से उसकी एडवाइजरी तैयार करके और अपने जो लाइसेंसेस है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या एक तरह से सिचुएशनल अवेयरनेस कैंपेन रन कर दें, या आप एक और काम कर सकते हैं जिसको कि थ्रेट इंटेलिजेंस कहते हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस के आप प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं और उसकी एडवाइजेस जो हैं वो सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर कभी किसी टाइम के ऊपर आपके कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है और वो आल्दो आपने कर्टेल कर लिया है, लेकिन उस इंसिडेंट का फर्दर फोरेंसिक्स की जा सकती है और उसकी एडवाइजेस बनाई जा सकती हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या इन्हांसमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट है जी हमारी सर्विसेज, हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस में हम सर्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और सर्ट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज में जो है हम पर्टिकुलरली सर्ट एस्टेब्लिश करने के हवाले से फ्रॉम A to Z हम लोग आपके जो डिज़ाइनिंग है, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी मॉनिटरिंग है, कोऑर्डिनेशन है, ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग आपको परफॉर्म करके देंगे। इसमें आपकी जो प्रेमिसेस सेटअप करना है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपके जो हायरिंग है नए स्टाफ की अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें हेल्प आउट करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प आउट करेंगे। अगर कोई हार्डवेयर वगैरह चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो प्रोक्योर करना, उसकी ट्रेनिंग करना, उसको आप लोगों के हैंड ओवर करना, ये सारा जो है फ्रॉम A to Z हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ हमारी सर्विसेज के हवाले से एक अदर सर्विसेज में हम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिजिटल फोरेंसिक की सर्विसेज हैं हमारे पास, IT रिस्क असेसमेंट है, इंसिडेंट रिस्पांस एंड हैंडलिंग है, VAPT है जिसको आप पेन टेस्टिंग वगैरह कह सकते हैं, गवर्नेंस है जिसमें आप ISO स्टैंडर्डाइजेशन है या PCI DSS है या कोई भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है तो वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क प्लीज। वीडियो ऑन जी जनाब, कोई अगर अमार जाफरी है, कोई अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज आई एम रेडी फॉर द आंसर। किसी का क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ PSO से, पाकिस्तान स्टेट ऑयल से। सर कैसे हैं आप? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुनाइए। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये सर्ट के हवाले से ये पूछना था, ये मतलब सॉर्ट ऑफ जिस तरह HSE में ERT होती है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक भी हो सकती है या ये सेक्टर, जैसे आप कह रहे हैं पावर सेक्टर के लिए होगा ये? नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये काम। ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा कि आप एक नेशनल सेट है हमारी, वो इंशाल्लाह बन रही है NTISB के अंदर, और वो बन रही है अपना नेशनल सेट ना, वो हो चुकी है, नोटिफाई हो गई है, उनके हेड आ गए हैं, अभी उनके साथ हमने 5-6 मीटिंगें कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक काम है। अच्छा, उनके अंदर पूरा निज़ाम काम कर रहा है। इसके अंडर बन रही हैं अब सेक्टोरल सर्ट्स ना। सेक्टोरल सर्ट जो है वो जैसे आपकी होगी, नेपरा की होगी पावर सेक्टर के लिए, स्टेट बैंक होगा बैंकिंग के लिए, SSCP होगा प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, HEC होगा यूनिवर्सिटीज के लिए, ये सब सेक्टोरल सर्ट्स होंगी। पहले फेज में सेक्टोरल सर्ट्स बन रही है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है चेयरमैन नेपरा को कि आप अपने तो इंशाल्लाह हम बनाएंगे अगर वो हमें अलाउ करेंगे। बाकी जो आपके जो आपके लाइसेंसीज हैं वो उन्होंने बनानी तो है, वो अगले फेज में डेफिनेटली 2-4 माह में वो उनको भी आ जाएगा कि आप भी बनाएं। तो अगर आप बनाएंगे तो ये तो हो गया इसके लिए, तो कोई भी जो सेक्टर है वो बना सकता है इसके ऊपर सर्ट, और ये मैंडेटरी है, यानी इस पर चॉइस नहीं है कोई कि भी बनाए या नहीं बनाए, इसको लॉ में आ चुका है। इत्तेफाक से वो है कि ना, शायद ने कहा था कि देर कर देता हूं मैं, किसी को मनाना हो, रूठ जाना हो, देर, तो हम हर काम में देर कर रहे हैं। तो ये मैं जी एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि किसी को मनाना हो या देर कर देता हूं मैं, तो हम देर कर देते हैं। तो ये बहुत राइट टाइम है मैं समझता हूँ नेपरा के लिए
और आप जितने लाइसेंसेस हैं आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। आप जिस शहर में भी हैं, हम ऑलमोस्ट डेली वेबिनार्स के ऊपर होते हैं। और ये जो शोबा है इसका, अच्छा इसमें मैं आपको छोटी बात बता दूं आपके सवाल के जवाब में, कि हम इमीडिएटली साइबर डील शुरू करना चाहते हैं। साइबर डील्स क्या होती हैं? जिसके जैसे ये फौजी डील्स होती हैं, दुश्मन अटैक तो नहीं करता ना, वो खुद ही दुश्मन बन जाते हैं, खुद ही वो मुहाफिज बन जाते हैं। इस तरह ये फायर ब्रिगेड की होती हैं कि ये आप आग बुझाने की डील्स कर रहे हैं। तो हमने अपना एक सर्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर बना लिया है, उसका नाम है CIT सर्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर। हम इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे आपके साथ उसके अंदर होपफुली हम जनवरी में पहली साइबर डील करवा रहे हैं। और वो इस तरह होता है, एक होती है रेड टीम होती है, मतलब ग्रीन टीम। रेड टीम अटैक करती है, ग्रीन उसको रोकती है। सॉरी, ब्लू टीम, रेड टीम और ब्लू टीम। ग्रीन टीम, रेड टीम अटैक करती है, ब्लू टीम उसको रोकती है। अब वो अटैक वाले नहीं बताते हम कहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ब्लू टीम बताती है कि ये अटैक फला चीज के ऊपर आया है और हमने उसको इस तरह रोका है। तो उसकी लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है काफी। अभी अगर आप लोग इसमें पसंद फरमाएंगे तो ये 14 तारीख को चाइना सर्ट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। मैं उसमें भी लिंक भेज दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम ये काम फास्टेस्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं। और आप में से कोई भी अगर हमें अप्रोच करेगा, नेचुरली आप वाया अपने IT डिपार्टमेंट में अप्रोच करेंगे तो हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं। एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन किसी और का? थैंक यू सर, नाइस ऑफ यू। तो करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह हम मौजूद है आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप जारी रखिए, आप सुनेंगे बाकी प्रोसीडिंग को। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ मोहम्मद मुनाफ साहब को, जो सर्वर फॉर सेल के CEO हैं। आप तशरीफ लाएं और आज के मौजू पे अपनी ब्रीफिंग दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अपनी प्रेजेंटेशन जस्ट ओपन अप कर लूं। आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं? आई बिलीव एवरीवन कैन शेयर द स्क्रीन, राइट? जी जी, वी कैन सी दैट। ओके, थैंक यू। ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद मुनाफ है। आई एम द CEO ऑफ सर्वर फॉर सेल। हो सकता है कुछ लोग आप लोग में से मुझे जानते नहीं हो। Today's topic, and I want to thank NEPRA and Chairman NEPRA for giving me the opportunity आज के लिए। एक्सपीरियंस जो है मेरा ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी और इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर ही रहा है। एंड मैं अपने आप को कहता हूँ कि ER के जो डॉक्टर होते हैं, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो बड़ा लंबा टाइम लगाता है। लेकिन जब हम ER के अंदर जाते हैं तो वो फ़ौरन जो भी उनको जो पैच वगैरह करना होता है या करनी होती चीज़ें वो कर देते हैं। So where I normally get involved mostly is the post incident, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है और उस वक्त जो सिचुएशन हो रही होती है एंड हाउ टू हैंडल दो सिचुएशन। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों में से हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा अपनी अपनी हद तक। एंड आई विल गोना शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंस, सम ऑफ माय टिप्स। जो खुदा न खास्ता अगर कभी भी किसी के साथ कोई भी इस टाइप का इंसिडेंट हो रहा हो तो प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें क्या हम ले सकते हैं। और इसमें स्लाइड के अंदर मैं लिखने वाला था पाकिस्तानी वे, बट आई डिडंट मेंशन दैट, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द इंसिडेंट रिस्पांस है। देखें, आपकी सर्ट बन गई, आपकी चीजें हो गई, आपका कोई भी इंसिडेंट होता है, इट कुड बी अ ब्रीच, इट कुड बी अ मेलवेयर, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ साइबर अटैक। जब भी होता है उसकी कुछ जर्नल टर्म्स होती हैं, जर्नल अप्रोचेज होती हैं, जर्नल SOPs होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम डिफेंसिव उस पर काम तो करते हैं, बट बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि व्हाट इफ समथिंग लाइक दैट हैपन, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। आई हैव सीन दैट इन मैनी मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, कि वहाँ पे जो है लोग समझ लें कि कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये इंसिडेंट हो जाता है, लोग डर जाते हैं, कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं करते, एंड देन इट गेट्स इनटू अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर जो है, जब कम्युनिकेशन सही नहीं होता। तो प्राइमरली जो हमारा स्लाइड है इसके अंदर एक इंसिडेंट अवेयरनेस के बारे में बात होगी। क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान फॉर डाटा ब्रीचेस या साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बारे में थोड़ा बहुत जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टीम मॉडल से कि कैसे उसको हैंडलिंग करना है और इंसिडेंट रिस्पांस के टेस्ट सिमुलेट भी कैसे करवाने। दैट्स प्राइमरली विल बी फोकस ऑन, चूंकि टाइम कम है। सो आई विल गेट बैक, स्टार्ट राइट अवे।
तो इंसिडेंट अवेयरनेस क्या होती है कि जो आपका डाटा है, इट कैन बी एनी फॉर्म शेप, वो बेसिकली जो हैकर्स है उनके लिए गोल्ड माइन होता है। देखें, साइबर अटैक क्यों होता है? या तो आपका डाटा लेने के लिए होता है या डैमेज करने के लिए होता है। इन स्पेसिफिकली केस ऑफ नेप्रा, most likely to take the control over either SCADA system or the industry system and कुछ ना कुछ किया जाए। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप रैंसमवेयर या इस टाइप का कोई अटैक लॉन्च हो जाता है जो उस डाटा को हॉस्टेज बना ले, तो वो फाइनेंशियल गेन के लिए भी यूज हो सकता है। सो नॉट नेसेसरली कि आप डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, यू आर जस्ट होल्डिंग इट एज अ रैंसम एज वेल। आप किडनैप आपने कर लिया, डाटा हाईजैक कर लिया। जब समथिंग एन इंसिडेंट लाइक दैट हैपन, तो उसके बाद किस तरह का प्लान चाहिए? तो ये आपके पास ऑलरेडी एक बुक बनी हुई होनी चाहिए बेस्ड ऑन द इंसिडेंट कि उसमें क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बड़े हॉस्पिटल जब आप जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ कोड लिखे हुए होते हैं। वो कोड लोगों को पैनिक करने के लिए नहीं होते, बट उनके इंटरनल कोड होते हैं कि उस कोड का मतलब क्या है। सिमिलरली जब एक एयरप्लेन पे जब पायलट जब रन कर रहा होता है और कोई भी फ्लाइट के अंदर इन फ्लाइट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो जितना भी एक्सपीरियंस पायलट होगा वो सबसे पहले एक बात कहेगा कि गो विद द चेकलिस्ट, कि जिस किस्म की भी सिचुएशन होगी उनके पास हर किस्म की एक चेकलिस्ट होती है, वो उससे गो थ्रू कर रहे होंगे। तो इसी तरह जो भी साइबर इंसिडेंट होता है उसकी एक चेकलिस्ट बननी चाहिए, उसकी एक चेकलिस्ट होती है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर होनी चाहिए। और उस पूरे प्रोसेस में जो आपके डिसीजन मेकर्स होंगे, जो आईटी के एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो आपका बिजनेस होगा, उन सबको क्लियर कट ये मालूम होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। अब स्ट्रेट टू द पॉइंट कि जब क्राइसिस अगर हो गया, कोई डाटा ब्रीच हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, उसके प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का जो है। देखें, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हम लोग कुछ बताते हुए डरते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, एंड जिससे अगर खुदा न खास्ते जिसकी वजह से वो गलती हुई है, अगर किसी ने कोई ब्लंडर कर दिया, किसी की वजह से कोई इंसिडेंट हो गया, लेट सपोज आपका एक सर्वर है फॉर एग्जांपल आईटी के लोगों के लिए, उसमें एक यूजर क्रिएट हो गया। जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है उसने सबसे पहले जाके वो डिलीट कर दिया और उसने किसी को नहीं बताया। द मिस्टेक ही डिड वाज, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी थी, कुछ ना कुछ हुआ, ही डिडंट कम्युनिकेट इट टू द सीनियर पार्ट। वहां पे प्रॉब्लम आ गई उससे। जब आप प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, उसकी लेटर डाउन द रोड पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैक हो गई, या पूरे का पूरा जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो हैक हो गया, या यूजर कॉम्प्रोमाइजेस होना शुरू हो गए, जस्ट बिकॉज उस बंदे ने आपको बताया नहीं व्हाई इट हैपन। हो सकता है वो डर गया हो सकता है वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो सकता है उसने इग्नोर कर दिया एंड इट टुक इट वेरी लाइटली। तो जब भी किसी भी किस्म का क्राइसिस है, इस टाइप की चीज आती है, उसमें मुसलसल जो है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी इन चीज़ों की, आईटी के साथ, खास तौर पर सिस्टम एडमिन के साथ, कि ये चीज़ें कभी भी ऐसे इंसिडेंट हो आप काइंडली इन्फॉर्म करें। एंड टू सीनियर मैनेजमेंट आवर रिक्वेस्ट कि जब ये इंसिडेंट हुआ हो तो उस वक्त इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करें कि किसकी गलती और क्या चीज़ है। जब आग लगी होती है तो हम ये चीज़ को फोकस नहीं करेंगे कि आग कहाँ लगाई गई है और कैसे लगी है, हमें ये फोकस करना है कि पहले आग को बुझाया जाए, फिर हम उसको करेंगे। तो जब भी कोई साइबर अटैक होता है, इट्स लाइक अ फायर, कि वो फायर जा रही है, वो बढ़ती चली जाएगी, हम जो भी करेंगे इट विल स्टार्ट कीपिंग ग्रोइंग अप। तो कम्युनिकेशन और क्राइसिस मैनेजमेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वार्निंग स्टेक होल्डर एंड कोऑर्डिनेशन रिपेयर ऑपरेशंस बाय गिविंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद कम्युनिकेशन हम किस तरह उसको डील करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ओके, नाउ डाटा ब्रीचेस या साइबर ब्रीचेस के अंदर ये होगा, सबसे पहला स्टेप होगा गेट प्रिपेयर्ड, फैक्ट्स एस्टैब्लिश करने, कम्युनिकेशन इमीडिएटली भी करनी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है। मिसाल के तौर पे प्रिपेयर्ड ये कि आप रेडी हैं या नहीं है किसी भी चीज के लिए। फैक्ट्स आपको एस्टैब्लिश करने के, जो भी ब्रीच हुआ क्विक एस्टैब्लिश क्या रीजन हो सकती है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अगर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, क्या एक पीसी पे, सर्वर पे, डाटा सेंटर के ऊपर हुआ है, नैस के ऊपर हुआ है, सैन के ऊपर हुआ है, ये क्विकली फिगर आउट करने। उसके बाद क्या डिस्कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे जब रैंसमवेयर आया था एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने जो गलती की वो ये की कि उन्होंने अपना इंटरनेट को डिस्कनेक्ट नहीं किया था उस वक्त जो, तो वो ऑटोमेटिकली आगे जाके पूरे उसको जो है वो करता रहा।
एंड एट द सेम टाइम एक और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही रैंसमवेयर आया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने मेन स्विचेस और पूरे जितने थे सब शट डाउन कर दिए कि आपस के कंप्यूटर कम्युनिकेट ना कर सके, तो उनका डैमेज लिमिटेड हो गया था। तो पहले फैक्ट्स आपको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ से हुई, क्या हुई और किस तरह हुई। उसके बाद कम्युनिकेट इमीडिएटली एंड डायरेक्टली। देखें हमारे यहाँ जो एक चेन ऑफ कमांड जब आती है कि जी हम अपने मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर उससे ऊपर कहेगा, और वो सीनियर उससे ऊपर सीनियर को कम्युनिकेट करेगा। When this kind of incident happens, तब आप एक सेम लेवल पे आ जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि जो भी आपकी एक स्ट्रक्चरल चीज है, जो अगर एक छोटा आई मीन जो आपका जूनियर है वो भी डायरेक्टली लेट हिम कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीआईओ और समवन, अगर अपॉर्चुनिटी वो एक्सप्लेन कर सकता है डायरेक्टली। डोंट से कि जी हम आप हमें बताएं फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जो है। उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको हमेशा एक रेडी करनी पड़ेगी एज सून एज पॉसिबल कि ऑफिशियल वर्जन क्या है। अदरवाइज हमारा माशाल्लाह मीडिया जो है वो स्पेकुलेट करने में जो है माहिर है, और वो हर तरह की जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट की जो खबरें होंगी वो पहले आपके लिए लेकर आएगा। सिमिलरली जहां पे हम अपनी पीआर एक्टिविटी से अपनी स्टेटमेंट को जब देते हैं, सोशल मीडिया का जो आपकी पीआर की जो टीम होगी वो सोशल मीडिया के चैनल्स को भी देखते हुए कि कोई रूमर्स तो ऐसी नहीं फैलाई जा रही कि कुछ हो रहा है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल इसकी ये दे दूं कि चंद दिन पहले एक बैंक का एक छोटा सा इंसिडेंट था, उनका एक इंटरनल आईटी का प्रॉब्लम आया था, दैट वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज कि वो 2 दिन से चल रहा था, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग स्पेकुलेटिंग कि जी ये कुछ और मैटर है और इस तरह का हो गया। तो हमारा एक अपना एक प्राइवेट फॉरम है, वहां पे हमने क्लैरिफिकेशन ली उनके सीईओ से। हमने कहा भाई मसला हुआ क्या है, हेल्प। उन्होंने कहा नहीं ये मसला हुआ है, एक दो क्रॉस क्वेश्चन, इट गॉट क्लियर दैट इट वाज प्योरली अ टेक्निकल इशू रादर देन सम सॉर्ट ऑफ अटैक। तो उसका हम लोगों ने हमारी जो कम्युनिटी है उसने रिएक्ट इस तरह किया कि जहां जहां उस इंस्टीट्यूट के बारे में नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही थी, हमने उसको काउंटर किया। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसे चीजें होती हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको अपनी रेपुटेशनल डैमेज को बचाने के लिए जो यहाँ पे। उसके बाद प्रिपेयर्ड आप कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने स्टेप्स आपको मेंशन कर दिए। हाउ विल द स्टेक होल्डर बी इन्फॉर्म, ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा। What other key steps need to take place immediately after the breach? अब it depends on the breach type, लेकिन आपके पास कौन से दूसरे स्टेप है कि आपको सर्वर डिस्कनेक्ट करना है, अपना पूरा डीसी डिस्कनेक्ट करना है, नॉक डिस्कनेक्ट करना है, वो अटैक की इंटेंसिटी कहाँ तक पहुंची है, उस तरह का जो है ना वो होगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको वो उसके बाद है कि आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होंगे उसके बाद। यानी कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो आपके पास एक अपनी या तो कोई ईआर की टीम होनी चाहिए। यू नीड टू नो व्हाट पीपल यू नीड टू कांटेक्ट राइट अवे, कि किस केस में आपको कौन से वेंडर को कॉल करनी है या किस सिक्योरिटी कंसल्टेंट को कॉल करनी है, बीट अगर रात के 2 बजे हो 4 बजे हो, हु नीड्स टू बी कॉल्ड। अदरवाइज ये होता है कि रात के 2 बजे एक इंसिडेंट होता है और पीपल आर बीइंग पजल्ड कि हम किसको कॉल करें। फॉर एग्जाम्पल वो अपने सीआईओ को कॉल करते हैं, सीईसओ को कॉल करते हैं, और वो आ तो जाएंगे बट अगेन देयर नीड्स टू बी एन एक्शन प्लान कि उसके अलावा कहाँ कहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है। एंड अगेन लीगल कंसर्न्स, किसी भी किस्म का अगर कोई इंसिडेंट होता है उसकी लीगल कंसर्न्स क्या होंगी। लीगल में देखें आपके पास लीगल से मुराद यहाँ पे ये भी होगी कि अगर आपको जो एविडेंसेस सेव करने उस ब्रीच के, वो कैसे करने। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है आपने उसकी बस बैकअप उठाए और रीस्टोर कर दिया एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। नो, यू हैव टू एक्चुअली प्रिजर्व द डैमेज सिस्टम, द हैक सिस्टम, ताकि बाद में फोरेंसिक्स के लिए उसको यूज किया जा सके जो है। Okay, establish the fact when if a data breach occurs, circle up your crisis communication team, top level executive। देखिए ये बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि जितनी बड़ी टॉप हायर की है दे विल बी द वन जो सामने कम्युनिकेट कर रहे होंगे आगे फर्दर, चाहे वो अगर आपके पास मीडिया की टीम हो या फर्दर कोई गवर्नमेंट से कोई कांटेक्ट आ रहा है वो उन्हीं को कॉल करेंगे। तो दिस शुड बी अपडेटेड। मैं अपनी कंपनी में हूँ, मेरी एक यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा रूल ये है
कि एनी किस्म की जो एबनॉर्मल एक्टिविटी आई किसी भी क्लाइंट की, जस्ट मुझे मैसेज करके बता दिया करो, so that if the customer calls me up, I know that what is going on and what is the situation is. तो आपको लाजमी ये आप मत समझिएगा कि जी एक आप काम कर रहे हैं तो भाई हमने अपना बस काम पूरा कर लिया, हमें ऊपर बताने की जरूरत नहीं है. यस, यू डू नीड टू टेल देम, इवन इफ इट इज अ स्मॉल ब्रीच, इट इज लीगली आप बाइंड है वो चीज अपने सुपीरियर्स को बताने के लिए, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक द ब्लेम जो है. इसके बाद जो आपके पास जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी वेंडर्स हैं, और जो आप लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें डिप्लॉय की हुई हैं, उनको कॉल इन करें. और जो अगर आपकी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या स्टैंड बाय पे आपने कुछ लोग ऐसे किए हैं जो स्पेशलाइज हैं इस चीज़ के अंदर, उनके नंबर भी हैंडी करें, उनको फ़ौरन आप इमीडिएटली जो है वो करें. और उसके बाद राइट अवे एक जो भी आपकी लोकल मीटिंग होती है वो इमीडिएटली उनके साथ मिलके आप इस्टेब्लिश करें. जस्ट जिसको जो मालूमात है इमीडिएटली डिप्लॉय करें कि भाई ये मुझे मालूमात है. किसी भी छोटी सी छोटी चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा. आप ये नहीं समझिएगा कि ये लेस इंपॉर्टेंट है या इसकी कोई वर्थ नहीं है. ये काम उन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का होगा, आपके सीसो का होगा कि कौन सी चीज लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज मोर इंपॉर्टेंट है. क्योंकि when breach happen, even a very small thing does matter. हो सकता है वो आपके पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का बाइस बन जाए. जब WannaCry का रैंसमवेयर जब लॉन्च हुआ था, एक रिसर्चर ने रिसर्च की थी. उसने रिसर्च के दौरान ये फिगर आउट किया कि एक डोमेन है WannaCry बार बार उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट डोमेन डिड नॉट एग्जिस्टेड. व्हाट ही डिड वाज ही सिंपली रजिस्टर्ड द डोमेन. उसने $10 का वो डोमेन रजिस्टर कराया. गेस व्हाट हैपेंड? उस $10 से WannaCry की जो फर्दर जो रैंसमवेयर की जो मूवमेंट थी वो रुक गई, क्योंकि वो उसका किल स्विच था. ही डिड नॉट दैट इट वाज अ किल स्विच, तो बट ही जस्ट डिड इट. तो ये बहुत छोटी सी चीज थी, बट ही जस्ट डिड इट टू सी कि क्या हो रहा है, और उससे पूरा एक रैंसमवेयर की एक चेन रुक गई वहां पे जो है. फिर ये कि डिटरमाइन व्हाट डाटा वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, हु वाज अफेक्टेड. कि डाटा के देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि क्या ये डाटा स्टील हुआ, डाटा हाईजैक हुआ, डाटा करप्ट हुआ, डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, और अफेक्टीज कैसे. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस हियर. हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि आपका बैकअप का डाटा सेफ है, क्योंकि आपकी वो एक सेकेंडरी लोकेशन पे रखा हुआ है, वो सेफ है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. आजकल के जो स्मार्ट अटैक है वो पहले पूरा आपका नेटवर्क पे होल्ड करते हैं, हर तरह की पेनिट्रेट कर जाते हैं कि कहाँ तक उनको घुसना है, किस किस जगह तक उसको घुसना है, और उसके बाद वो वहां पे अटैक होता है. तो लेट्स सपोज आपने अपनी एक सेकंड लोकेशन पे आपने अपनी डीआर बनाई हुई है, जो सिर्फ बैकअप ले रही है, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रही है आपकी प्राइमरी साइट से. तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो साइट खुद भी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई हो. यू जस्ट डोंट नो इट येट, एंड यस आई हैव सीन दैट कि ये हो चुका है यहाँ पे. तो और सबसे आखिरी बात इसमें ये होता है कि सिक्योरिटी होल पैच हुए या नहीं हुए. इंटरेस्टिंगली एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके पास जब हम गए एक एक्टिविटी करने के लिए, रैंसम का इंसिडेंट जब हमने देखा कि ये हो चुका है, उसको हमने कंटेन तो कर लिया, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट उनके पास लाइसेंस भी थे. अनफॉर्चुनेटली उनका जो सिस्टम एडमिन था उसने किसी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीसी पे लाइसेंस इंस्टॉल ही नहीं किए हुए थे. तो जब लाइसेंस इंस्टॉल नहीं किया तो उसने अपडेट नहीं ली. जब अपडेट नहीं ली तो ऑटोमेटिकली जो रैंसमवेयर को जो एक्सप्लॉइट यूज करना था उसने बड़े आराम से कर लिया जो है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ये आपका सिस्टम हमेशा पैच होना चाहिए. अगर पाकिस्तान में हम इस बात की परवाह नहीं करते लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर की, हम कहते हैं, बट प्रैक्टिकली नो वी डोंट केयर अबाउट इट दैट मच. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बगैर लाइसेंस के चला रही हैं. उसके लिए देखें एक ऑफलाइन पैच के मैकेनिज्म आते हैं, तो काइंडली डू पैच दैट, वरना ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है. तो जब हम ये देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, तो उसमें ये लाजमी हमें देखना पड़ता है कि क्या सिस्टम पैच हुए हुए थे या नहीं हुए हुए थे. एंड रिसेंटली मुझे किसी ने कॉल की थी, मैंने कहा सिस्टम पैच है, उसने कहा जी पैच है, एंड आई न्यू उसकी टोन से कि वो झूठ बोल रहा है जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, वो नहीं कह रहा क्लियरली. खैर, थर्ड पार्ट आता है कम्युनिकेट इमीडिएटली एंड डायरेक्टली. देखें, सबसे पहली चीज बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम यहाँ पे प्रिज्यूम कोई भी चीज नहीं करेंगे कि सर ये हुआ या यूं भी हो सकता है, नहीं. अगर आपको लेट्स से एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, एक इंसिडेंट हो गया, वो कहता है जी आज से एक हफ्ता पहले मैंने एक एक्टिविटी नोटिस की थी. जाहिर बात है उसके सुपीरियर पूछेंगे व्हाई डिडंट टोल्ड अस. ही सेड बिकॉज़ आई थॉट इट वाज लेस इंपॉर्टेंट, बट नाउ इट इज, वो इंपॉर्टेंट बन गई. अब
तो जो भी ऐसी चीज होती है उस वक्त आपको बिल्कुल सच बोलना है। इट्स जस्ट लाइक कि आप डॉक्टर के सामने खड़े हुए और आपको अपनी बीमारी के बारे में सच कहना है। देखें, अगर आप ये नहीं बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज मिस कर जाएंगे, तो ना सिर्फ आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं बल्कि अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ जितने भी खानदान वाबस्ता हैं आप उन सबको हर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये नेशनल लेवल की चीज है, कोई खास तौर पे कोई एनर्जी सेक्टर की कोई चीज है, तो आप पूरा एक जो है ना नेशन को अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी की भी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली, अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का इंसिडेंट हो रहा है, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न है, बगैर खौफ के, बगैर डरे, आप उसको जस्ट फॉरवर्ड बता दें कि ये इस तरह हुआ था, जो है ना। दूसरी बात, जो सीनियर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आप लोग जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, आप अपने जूनियर्स को काइंडली बताएं, थोड़ा सा वो करें, बजाय हाइपर होने के कि क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच ये होगी, वो ये सिचुएशन नहीं है गुस्सा करने की। द सिचुएशन इज टू कंटेन इट दैट टाइम व्हेन एन इंसिडेंट हैपन। सो मोस्ट लाइकली जितनी आप मालूमात सीनियर लोग अपने जूनियर से ले सकते हैं, आप मैक्सिमम मालूमात लेने की कोशिश करें। ये मालूमात आपको डांट डपट के नहीं मिलेगी, उनसे हमदर्दी करके मिलेगी, उनसे कंसर्न शो करके आपको मिलेगी। अगर आपने गुस्सा किया, कोई भी ऐसी चीज की, ठीक है वो होगा, लेकिन हमारा मेन मकसद है, हम फायर फाइटिंग मोड में चल रहे होते हैं, उस वक्त चीजों को जो है कंटेन किया जाए, ना कि उस चीज को ज्यादा जो है ना बढ़ाया जाए। और इसी तरह ये कि जब ब्रीच जब होता है, तो हमें ये देखना उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो लोग इम्पैक्ट होंगे उसका उस किस तरह असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे, खुदा न खास्ता अगर आपका एक एडी का सर्वर डाउन हो जाता है, जो एक्टिव डायरेक्टरी जिससे आपकी यूजर ऑथेंटिकेशन होती है, उसमें वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए, डेट मीन्स कि आपका हर यूजर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बिकॉज इट्स द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द होल सिस्टम, ऑफ द होल नेटवर्क। जो आपका लॉग इन मैकेनिज्म है, होते हैं, पेंटागन भी ब्रीच होता है। देयर इज, हम ये नहीं कह सकते आप जितना भी सिक्योर कर लेंगे अपने नेटवर्क को, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब और किस तरह ब्रीच होता है। हम ये नहीं कह सकते कि 100 देयर इज एनीथिंग एज 100% सिक्योरिटी। हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं, हम चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट वो करवा सकते हैं जो ब्रीच होने से पहले कोई इंडिकेशन दे दे, या लिमिटेड आपका डैमेज होगा, नॉट मेजर डैमेज होने से आप बचा सकते हैं। बट हम कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जी हम 100% सेफ एंड सिक्योर है। नो वन कैन क्लेम दैट, जो है। इसके अलावा जो जितनी टीम्स हैं उन सबको आप क्लियर बताएं, जब डाटा ब्रीच हो, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, हर एक की छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दें, किस तरह होता है। अगर आप एक बॉस है तो अपने जूनियर को ट्रस्ट करें, उसके बताएं, और उससे कहें कि जी हम और किस तरह आपकी हेल्प करें इस चीज को करने में, जो है किस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं, या किस तरह जो है आप। क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए कि आपकी जिसकी जो जो स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपके पास एक आईटी के अंदर एक लड़का हो जो आपका आईटी का बहुत अच्छा हो, लेकिन बिहाइंड द सीन वो सिक्योरिटी में भी बहुत अच्छा हो। He may not be working in the IS department, but he may be damn good with security as well. देखिए, आईटी एंड सिक्योरिटी का साथ साथ चलना होता है। सिक्योरिटी उसको पॉइंट आउट करवाती है, आईटी उसको स्ट्रेंथ देती है। तो आईटी वालों को भी सिक्योरिटी का बहुत हद तक एक्सपीरियंस रहता है। सिमिलरली बहुत सारे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हमारे हैं जिनको आईटी का भी पता होता है। तो एक दूसरे की उस स्ट्रेंथ को यूज करें उस वक्त, जो ये नहीं हो ब्लेम गेम नहीं चल रहा होगा, जी हमने ये किया, हमने वो किया। इस टाइप की कोई भी चीज जो है आप नहीं करें काइंडली, जो है। फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या क्या हो सकता है, लोगों को बताया जाए जी ये होता है, बी ऑनेस्ट एंड कंपैशनेट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल अगर मैं दूं प्रैक्टिकली, नेशनल बैंक वाज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। ओपनली इन्होंने कहा कि हाँ ये चीज हुई है एंड इस तरह हुई है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ बैकलैश, एक्चुअली दे कवर्ड, उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें कवर्ड कर ली, और जो स्पेकुलेशन जिस तरह की थी वो भी बहुत सारी किल हो गई। जो है बजाय इसके कि कोई स्पेकुलेट करे कि जी बिल्कुल हो गया जी, कोर में हम घुस गए, यहाँ घुस गए। तो पावर सेक्टर के अंदर अगर कभी कोई ऐसे इंसिडेंट होता है, तो बजाय इसके कि कोई मीडिया या कोई भी शख्स ये स्पेकुलेट करे कि जी वो पावर ग्रिड के अंदर घुस गए और उन्होंने पूरा स्टेशन कंट्रोल कर लिया, या उन्होंने अपने वोल्टेज बढ़ा दिया, या उन्होंने पानी का जो बहाव है वो तेज कर दिया, इस टाइप की कोई भी फॉल्स क्लेम से पहले आप लोग अपनी स्टेटमेंट दे दें कि जी यहाँ तक हुआ है, लिमिटेड ब्रीच है, या जो भी एक मोहतात स्टेटमेंट है वो आप दें और वो करें। फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए, अपनी टीम को भी, और उसमें भी कि भाई जिन लोगों ने किया है वो ये होंगे। आप लोगों ने उसके इमीडिएट बाद क्या किया, यानी आप लोगों ने क्या किया, एक्शन प्लान किया, नॉट एवरीथिंग, बट एक सेफ, वही अगेन सेफ स्टेटमेंट जारी की जाए कि जी हमने इस चीज को इस तरह कर लिया। डोंट गिव एनीथिंग विच इज सीक्रेट, या जो आपके ऑपरेशन को डायरेक्ट मुतासर करे, लेकिन एक मोहतात स्टेटमेंट दी जा सकती है।
और आगे वो ये कि हम और क्या क्या कर रहे हैं, इसके पीछे हम क्या क्या कर रहे हैं, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम जो है साइबर एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं जो इस चीज को डिग आउट करेंगे, ऑपरेशन कब होगा। और सबसे बड़ी बात देखें, कोई भी ये मीडिया बहुत सारे सवाल करता है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको सवाल के मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन है उनको देने की कोशिश की जाए, वरना वही बात है कि राय का पहाड़ लोग जो है ना बनाते रहेंगे। एक सेंटर पॉइंट आपका जो भी इसमें मीडिया का जो बंदा होगा उसको इन्वॉल्व किया जाए। बट हियर आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग, देखें आपका जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है नॉर्मल सिनेरियो में, वो यहाँ इस सिनेरियो में वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल जो पीआर के लोग हैं जो स्टेटमेंट देते रहते हैं, नो दे विल नॉट गोना वर्क ओवर हियर, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि वो इस चीज की ट्रेंड नहीं है, वो अपने लिहाज से कुछ ना कुछ बोल देंगे एंड देन अगेन थिंग्स विल गोना मैस अप। तो बेटर इज कि उस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट सीसो या तो खुद फ्रंट पे एक तरह से आए कुछ चीजें दे, या कोई एक जिम्मेदार शख्स आए जिसको उस बारे में मालूम हो, ताकि किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे स्टेटमेंट में। पता चला पीआर के पर्सन ने कोई ऐसे अल्फाज यूज कर लिए जिसका मतलब बिल्कुल उलट होता है कि यानी वो कैटास्ट्रोफिक की तरफ जा रहा है जस्ट बिकॉज उसने एक स्टेटमेंट इस तरह की दे दी। लेकिन जो सीसो होगा, सीआईओ होगा या आईटी हेड्स होंगे, वो एक मोहतात स्टेटमेंट देंगे बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट जो है। इसी तरह सिमिलरली आप अपने सोशल मीडिया के आजकल बड़े पॉपुलर है, बड़ा इन है, ट्विटर बड़ा इन है, वहां पे भी आप लोग अपने बारे में बताते जाएं कि भाई इस तरह चीजें हो रही हैं, ये चीज हो रही है, और आप अपनी टीम को भी बताएं कि जहां जहां कोई ऐसे नेगेटिव फीडबैक हो रही है वहां पे उसको डिफेंड किया जाए, रादर देन कि आप जो है प्रोवोक करें या कोई ऐसी चीज करें। कुछ कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर भी, बहुत सारे ग्रुप हैं, अम्मार जाफरी साहब का भी एक ग्रुप है, एक दो और ग्रुप है पाकिस्तान में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि ये वहां से आपको हेल्प भी मिल सकती है, और जो इस टाइप की नेगेटिव फीडबैक्स आ रही होती है उनको भी किल किया जा सकता है। फिर सबसे इसमें अलग बात है कि फॉलोअप भी करें कि जब तक ये इंसिडेंट रह रहा है, एक दिन 2 दिन मुसलसल आप अपडेट देते रहे। इट्स जस्ट लाइक कि आपका पास पावर आउटेज हो गई किसी जगह पे, आपने उस कंपनी को कॉल किया, उसने फोन पे कहा जी 6 घंटे के लिए हमारा ये डाउन हुआ, ठीक है फाइन, आपको मतलब 6 घंटे कुछ नहीं करने, 6 घंटे बाद आपने दोबारा की, उन्होंने एक अपडेट दी जी अभी भी काम चल रहा है, 2-3 घंटे और लगेंगे। समथिंग उनको देना इज बेटर देन गिविंग नथिंग एट ऑल जो है। दूसरी चीज, हैव अ स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड दैट आंसर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इवन आफ्टर द इनिशियल पीरियड। देखें बहुत सारे सवाल हैं रिपीटेटिव आएंगे, सर कैसे हुआ, सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने क्यों नहीं किया, किस तरह किया, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपकी टीम बना के रख ले और वो हैंड ओवर करते जाए। इसके अलावा नो कमेंट वाला बड़ा एक जो है क्रिटिकल पॉइंट है। देखें अगेन वही बात है कि जब भी हम किसी जगह पे स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, कहते हैं जी नो कमेंट, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। सो बेटर कि हम एक जुमला भी कोई ऐसा कह दें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दैट बी मच बेटर देन सेइंग नो कमेंट ऑन दैट जो है। और सोशल मीडिया के जो आपके चैनल है उसको मुसलसल अपडेट कर दें। एक चीज, अब इंसिडेंट रिस्पांस प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग जो आपकी आईआर की टीम है उनको ये चीजें मालूम होंगी, बट जस्ट एक इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप कर देते हैं जरा क्विकली जो है। प्रेपरेशन ये है कि put incident response in the spotlight and get the organization ready for imminent attack, जो आपने प्रिपेयर किया होता है। आइडेंटिफाई करें कौन कौन से आपके जो एसेट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, किस कौन कौन सी चीज हो सकती है, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो उनको कंटेन कैसे किया जाता है। द फोकस इज ऑन मिटिगेटिंग द डैमेज that the attack can cause. It's unwise to delete everything in a panic as evidence is important. वही बात जो मैंने शुरू में कही कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने रीस्टोर उसी सर्वर पे कर दिया या उन्हीं हार्ड ड्राइव पे रीस्टोर करके आप समझ रहे हैं कि थिंग्स आर ओके। फिर आप टीम कैसे बनाते हैं, कॉन्टैक्टिंग मेंबर ऑफ द टीम, इंटरनल एक्सटर्नल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द बैकअप, बेसिकली सॉरी उसी का पार्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही पहले के भाई अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने जो जमा किए हुए, अवेलेबल बैकअप किया ना। अगेन बैकअप में आपको मेक श्योर करना है, सबसे पहली चीज एक अलग टीम सिर्फ बैकअप्स को देखे कि बैकअप्स आपकी अवेलेबल है। बेशक आपने 3 दिन पहले चेक किए, बेशक आपने एक रात पहले उस बैकअप को चेक किया है, जिस वक्त इंसिडेंट हुआ आपने बैकअप इमीडिएट चेक करनी कि बैकअप की हेल्थ कैसी है क्या, क्योंकि वो पॉइंट होगा जो आपका रिकवरी पॉइंट बनेगा। खुदा न खास्ता ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाय द टाइम एन इंसिडेंट इज हैपनिंग आपने बैकअप को सिक्योर नहीं किया तो बैकअप भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में चली गई। दैट इज अ वेरी पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकली हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई लिमिटेड खाली कंप्यूटर्स के अंदर हो रहा है, सिर्फ मेलवेयर का अटैक आ गया, तो आपने पीसी अलग किए, उनके बाकी पीसीओं को आपने पैच करना शुरू किया। जो हमने कहा एस्टैब्लिश द फैक्ट किए, हमें पता चला एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट के दौरान कि जी पीसी पैच नहीं है, क्या करना जी, सबसे पहला काम है बाकी पीसी जो बच गए उनको पैच करना शुरू किया जाए जो है।
उसके बाद रिकवरी के जो पीसीस कॉम्प्रोमाइज हो गए, जो सर्वर, जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनको किस तरह वापस लेकर आना है, वो फिर रिकवरी का होगा। और ये जो पूरा जो प्लान है, यानी आपको कि भाई कौन टीम मेंबर होगा, किसको कांटेक्ट करना है, बैकअप कैसे चेक करनी है, पैच को कैसे चेक करना है, रिकवर कैसे करना है, आपको जो है हर क्वार्टर में ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और पाकिस्तान में तो मैं कहूँगा हर महीने करनी चाहिए। और फाइनली उसके बाद उन एक्सरसाइजेस के बाद जो आपने लेसन लर्न किया है, कि पता चला कि जी हमने पैच का कहावा तो है लेकिन पैच नहीं अवेलेबल हुआ। क्यों अवेलेबल नहीं हुआ जी? जो आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसने टेंडर नहीं किया, या उसने वो चीज मंगवाई नहीं, या बजटरी कॉन्स्ट्रेन है, बजटरी तो क्या करना होगा, वो उसकी सारी जो है ना वो आगे की बात है। टीम मॉडल्स आपके किस तरह बनेंगे? 3-4 किस्म के टीम मॉडल्स होते हैं। सेंट्रल इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है, जिसमें जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही टीम रिस्पॉन्ड कर रही है, किसी भी चीज का होगा। ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंसिडेंट रिस्पांस टीम होती है, कि उनके पास मल्टीपल इंसिडेंट्स की रिस्पांस टीम है। मिसाल के तौर पर रैनसमवेयर की अलग टीम होगी, ब्रीच की अलग होगी, सर्वर के अंदर कुछ होता है उसकी अलग होगी, स्काडा सिस्टम इंडस्ट्री या ओटी सिक्योरिटी की एक अलग टीम होगी। तीसरी होगी कोऑर्डिनेटेड टीम। तो अच्छा, ये टीम सबसे इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट टीम ये होगा, इंसिडेंट रिस्पांस टीम प्रोवाइड्स एडवाइस टू अदर टीम्स विदाउट हैविंग अथॉरिटी ओवर दोस टीम्स। दिस इज मोर लाइक अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स। हम जैसे लोग यहाँ पे, हम जैसे लोग आते हैं, जो जब एक इंसिडेंट होता है हम काम नहीं करते बट हम एडवाइस दे देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे रात के 3 बजे कॉल आती है, जी ये हो गया, वहां मैं पहुंचता हूँ, पता चला वेंडर्स ऑलरेडी मौजूद है। माई जॉब वॉज ओनली कि उन वेंडर्स को मेक श्योर करना कि एक दूसरे की टैरिफ के अंदर ना घुसे। मिसाल के तौर पर सैन वाला जो वेंडर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर नहीं घुसे, सिस्टम वाला वेंडर अपनी जुरिस्डिक्शन जो नेटवर्क के अंदर नहीं लेकर आए, थिंग्स लाइक दैट जो है। और इसमें फिर अगर आपको हेल्प की भी जरूरत, तो स्टाफिंग मॉडल में आपके अपने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, पार्शली आउटसोर्स या कंसल्टेंट हो सकते हैं, या फुली आउटसोर्स। आजकल ये मॉडल भी काफी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो वो फुल आउटसोर्स करते हैं, उनसे आप एडिशनल स्टाफ की भी हेल्प कर सकते हैं। 8 चीजें जो आप आईआर की प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, ऑब्वियसली टीम का मोरल लूज होगा। जब मोरल लूज होगा तो ऑब्वियसली वो उस तरह काम नहीं कर पाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज होगा। टेस्ट योर प्लान। अच्छा, टेस्टिंग प्लान की आगे एक स्लाइड और है, बहुत छोटी सी, कि किस तरह करना है, बट आप रेड टीम ब्लू टीम अपनी जगह होती है। इसको सिमुलेट भी क्या करें कि जी अगर ये हो गया क्या होगा, जिसको हम कहते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, जो हम लोग भी करवाते हैं। रियलिस्टिक इंसिडेंट ड्रिल हो गया, परफॉर्मेंस, उसके बाद रिव्यू हो गया कि भाई एक आपने अज्यूम किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फायरवॉल लगा ली, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर लगा लिया, उसके बाद हम सुकून से सो जाते हैं कि जी अब हमें कुछ नहीं होगा। या हमारे नेटवर्क के लोग हमें कहते हैं कि जी सर सब कुछ कर दिया, अब कोई घुस ही नहीं सकता। ये सिस्टम के लोग होते हैं, कहते हैं सर हमने सब कुछ कर दिया। नहीं, ये चीज होती है और होती रहेगी। तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये हो गया तो क्या आप करेंगे। एंड 90% ऑफ द पीपल विल गोना फेल ओवर हियर। एक्सक्यूज मी। अच्छा, डिटेल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी में यह है कि इंसिडेंट रिस्पांस टीम नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू फॉलो व्हेन एन इंसिडेंट हैपेंस। If a plan is too complex or rigid, teams will not be able to handle unexpected situation. Create a detailed plan with the flexibility to support different type of incident. Review the plan at least every 6 months. Be prepared for new security issue and attack affecting your industry. Now, कभी कभार ये होता है, हम उसमें ये समझते हैं चीजों को करने में कि बस हमने ये मालूमात दे दी, काफी, हमारी टीम खुद आगे कर लेगी। नहीं, आप हर चीज की चेकलिस्ट बनाएं। छोटी से छोटी चीज की भी एक चेकलिस्ट बनाएंगे। यूएस में जब मैं टेक्निकल सपोर्ट, कभी कभार हम जब कॉल करते थे सर्वर की टेक सपोर्ट को, हम खुद, आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द सर्टिफाइड टेक एट दैट टाइम सर्वर का। तो मैं कहता था कि जी मुझे ये एचपी या कॉम्पैक्ट की सपोर्ट चाहिए। वो मुझे कहता था जी पहले स्टार्ट पे क्लिक करें, ये करें। मैं कहता था मैं लेवल 3 पे, मुझे डायरेक्ट बताओ करना क्या है। दैट वाज ओके। बट अगेन इस केस में वो चेकलिस्ट में आपको वही करना होगा जी, पहले स्टार्ट पे बटन दबाएं, फिर सेटिंग पे बटन दबाएं, फिर कंट्रोल पैनल पे बटन दबाएं। ये आपको लिखनी पड़ेंगी। वी आर ऑल ह्यूमन, हम भूल जाते हैं, हम कुछ स्टेप्स लेना भूल जाएंगे। उस वक्त वो चेकलिस्ट काम आ रही होंगी कि क्या ये चीज हमने की, ये चीज हमने की, ये चीज हमने की। हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिस नहीं करना जो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम करे या रिकवरी की राह में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसका यही बहुत डिटेल प्लान भी होनी चाहिए, बट सिंपल वर्ड्स में, नथिंग। और आप ये मत अज्यूम करें कि जो बंदा ये प्लान पढ़ेगा
वो समझ जाएगा। नहीं, आप प्लान उस टाइप का बनाएं कि अगर एक 12 साल के बच्चे को भी वो प्लान देना पड़े तो वो उसको फॉलो करके कर ले। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यूएस के अंदर, जो डिटेल प्लान आते हैं, चीजें आती हैं, वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्सप्लेन की हुई होती है उन्होंने। तो आप अपनी टीम में भी यही करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके पास जो टीम है उनका लेवल क्या है। एक्सपर्ट लेवल होगा, वो खुद ही एडजस्ट करेगा, बट व्हाट अबाउट उस इंसिडेंट के टाइम आपके पास एक जूनियर लड़का अवेलेबल होगा जो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। दैट प्लान विल गोना हेल्प हिम एट दैट टाइम। जो है कम्युनिकेशन, अगेन वही है कि द इंसिडेंट रिस्पांस टीम शुड नो एग्जैक्टली हु टू कांटेक्ट, व्हिच कम्युनिकेशन चैनल टू यूज एंड व्हाट इंफॉर्मेशन टू शेयर। आप लोग लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट लिंक या कोई ऐसा इंटरनल सेंट्रल कम्युनिकेशन का सिस्टम यूज करते हैं जो डाउन हो गया, अब क्या करेंगे? तो आपके पास जब ये इंसिडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट कम्युनिकेशन हमारे पास ये होगा, हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप होगा या कोई हम इंटरनल कॉन्फ्रेंस कॉल होगी या कुछ और हम कर रहे होंगे जो है। तो उसमें बाकायदा डिटेल मेंशन हो कि किसको कॉल करना है, सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन होगा, इस टाइप की चीजें आपको देनी पड़ेंगी। स्टेक होल्डर के जो आपके उसमें स्टेक होल्डर्स है उनको बताना भी जरूरी है। वाइटल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग अ सिक्योरिटी इंसिडेंट, डिपार्टमेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, पार्टनर, कस्टमर एंड लीगल कैन ऑल बी स्टेक होल्डर। आपका भाई डाटा का ब्रीच होता है, अभी प्राइवेसी लॉ पाकिस्तान में आने वाली है, उसके बाद आपका डाटा का कोई ब्रीच होता है, आपके यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई लेके चला जाता है, आपका सीईओ लीगली लायबल है। ये मैं अभी बता दूं कि जो नई जो प्राइवेसी का जो कानून आ रहा है, योर सीईओ और द चीफ जो है आपके, वो लीगली लायबल है उस चीज के। मीनिंग के वो जो हम जो कहते थे ना कि जी सीईओ की जान बच जाएगी और नीचे वाले फंसेंगे, अब वो केस नहीं रहा। डायरेक्टली जो नई पॉलिसीज आ रही है उसमें सीईओ को लायबल कर दिया गया है। सिंपलिसिटी, चीजों को बहुत सिंपल रखें, कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों की वो नहीं करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि सीधी लाइन भी, अगर सीधा रास्ता भी जा रहा होगा ना, हम कहेंगे नहीं हमें राइट या लेफ्ट होके जाना है। तो अगर एक चीज सीधी, उसको काइंडली सीधी रखें इस प्लान को बनाते हुए। कोई भी खाम होगा जस्ट बिकॉज कि आपके यहाँ कोई बहुत ही क्रिएटिव बंदा है, वो कहते हैं जी मुझे अपनी क्रिएटिवनेस दिखानी है, बोला भाई क्रिएटिवनेस को आप साइड में रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताओ जो सिंपल होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद इंसिडेंट प्ले बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने यहाँ पे देखा है पाकिस्तान में कि उनके पास प्ले बुक बनी हुई है। डिटेल में पढ़ देता हूँ। इन एनी गिवन सिचुएशन, playbooks offer step-by-step guidance. Playbooks are important in a scenario where a system expert is unavailable to a rotating on-call team. They allow teams to respond faster and leverage incident response practice gathered by the organization security team or other team. देखिए वही बात जो मैंने आपसे पहले भी सिंपली आपको बताई थी कि जी आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, प्लेबुक्स उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगी। डीडॉस का अटैक आता है फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर किस आईपी पे आता है, क्या करना है, आपका पूरा एस इन्फेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको किस तरह उसको हैंडल करना है सिचुएशन को, आप लोग सिंपली रिलाई करेंगे पीटीसीएल के ऊपर या ट्रांसफर के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे, विच इज नॉट रियली द वे अकॉर्डिंग टू मी। देयर आर सम अदर वेज दैट कैन बी डन, दैट कैन बी टैकल्ड इन, वो हो सकता है इस तरह का। Skill gap, another problem is कि teams with limited resources overwhelmed with alert, SOC बेचारा हमारा हर वक्त alert की इसमें रहता है, cannot prioritize credible threats and critical incident. Tools with advanced analytic and automation capabilities allow unskilled security team members to respond to security incident more effectively. देखें अगेन वही बात है कि SOC का हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक फुकदान है, हमारे यानी पूरी दुनिया में, और जो सॉक के जो रिसोर्सेज भी आते हैं उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन करना पड़ता है। आई मीन ऑल्दो कि दे मे और मे नॉट हैव एक्सपीरियंस, बट अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग सिक्योरिटी मॉडल है, अलग चीजें उनको करना पड़ेगा, और वो आपको उनको प्रॉपर टूल देने पड़ेंगे कि वो एक एडवांस चीज फौरन के फौरन पकड़ सकें। ये नहीं हो कि आपने एक सिंपल सा सीम लगा दी और देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं हर चीज पकड़ के आपको दिखा देंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट एज वेल, लेकिन उनके स्किल्स पे भी काम किया जाए जो है। अब सबसे आखिरी चीज जो है इंसिडेंट रिस्पांस टीम जो है, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान को टेस्ट कैसे किया जाए। An incident response plan is a document that requires testing to ensure its validity and effectiveness. Ideally, organizations should perform tests regularly to ensure the plan is effective and updated with compliance requirements and security standards. फिर incident response plan testing typically involve running simulations to ensure that respondents understand their respective role and responsibility. It includes various threat scenarios such as DDoS attacks, ransomware, and system sabotage. Now, ये चीज आपकी रेड टीम ब्लू टीम जब टेस्टिंग हो रही होती है तो ये चीज होती है, इट्स नॉट कि नहीं होती। द प्रॉब्लम इज हमारा फोकस होता है रेड टीम का कि किसी भी तरह इसके अंदर घुस जाओ, और ब्लू टीम का फोकस होता है कि किसी भी तरह इसको रोक दो। दीज आर द टू थिंग्स व्हाट दी बोथ टीम्स आर मिसिंग
कि अगर ये चीज हो जाती है तो कैसे हुई, उसके बाद जो पूरा जो एक IR का प्लान होता है वो कंपनी, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी टेस्ट ही नहीं करती कि हुआ कैसे, उसके बाद क्या करना है। रेड टीम झंडे गाड़ी की, जी देखें हमने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देखें ये हो गया। ब्लू टीम झंडे गाड़ी की, जी हमने बचा लिया। बट इन दोनों जंगों में नुकसान तो ये हो रहा है कि भाई एक्सरसाइज इसलिए करवाई जा रही है आप लोगों से कि अगर कुछ हो रहा है तो आप बताएं उसके बाद क्या करना है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इट जो है। तो यहाँ पे वो चीज होनी चाहिए जो है। पेपर बेस्ड टेस्टिंग हो सकती है, आप सिंपली बैठ रहे हैं अपनी टीमों के साथ, आपने थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करते हैं कि व्हाट इफ वाला जो सिनेरियो है कि अगर ये होता है क्या होगा। लेट्स से आप कहते हैं जी हमने फायरवॉल लगा ली, सब कुछ, आप कहते हैं ये ब्रीच हो गया, आपने कहा जी मैंने लेटेस्ट फायरवॉल लगाई, आप कहते हैं फिर भी आप ब्रीच हो गए, कोई सिस्टम से आगे बढ़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं। 3 किस्म के जवाब आते हैं, जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम के अंदर घुस गया। दूसरा एक बंदा होगा वो कहेगा जी हो सकता है कि फायरवॉल कॉम्प्रोमाइज हो, उसके बाद एक और बहुत ही कोई छोटा सा एक और सिस्टम लगा दिया जाए जो उसको प्रोलॉन्ग कर दे, जो उसको एक सेकेंडरी लेयर मिल जाए सिक्योरिटी की या कुछ और उसको चीजें मिल जाए। तो वो हर इन्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन आपका अगेन वो ये कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है। और ये व्हाट इफ वाली सिचुएशन ये नहीं होगी कि आप बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज करें कि जी बस सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये चीज हो गई। नो, नथिंग लाइक दैट। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। कहाँ की एंट्री है, इस स्टेज तक पहुंच गया, अब हमें क्या करना है, इस स्टेज तक पहुंच गया, अब हमें क्या करना है। इट इज अ प्योर वार गेम। जिस तरह फौज आगे जाती है, हर प्लान आपका उससे रिलेट होता है। या अगर आपका एक पावर सेक्टर के अंदर आप एक मीटर होता है, आपकी ओवरहीट चीज हो रही होती है, तो उसका मतलब ये नहीं हो रहा होता कि आप हाथ पैर छोड़ दें, आप स्टिल मॉनिटर करते हैं। यू कीप योर काम, आप पैनिक नहीं होते, उसको देख रहे होते हैं, पर उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये भी बहुत सारी चीजें जो हमें जो है ना वो होगी। फिर आ जाती है टेबल टॉप एक्सरसाइज। अगेन इट्स सिमिलर टू पेपर बेस्ड एक्सरसाइज, लेकिन ये पूरी एक्टिविटी आपकी हो रही होती है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स आपके इन्वॉल्व होंगे। उसको जो है हम लोग बेसिकली थ्योरेटिकली वो यही वाटर वाला सिनेरियो आता है, लेकिन उसमें ब्लू टीम भी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन वो सारी प्रैक्टिकल नहीं होता। वो सारा ज्यादातर थ्योरेटिकल चल रहा होता है, लेकिन उसमें प्रॉपर टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। पेपर बेस्ड टेस्टिंग में हाई लेवल हो सकता है, लिमिटेड टीम के साथ आप कर सकते हैं। नेटवर्क की टीम है, उसने पेपर बेस्ड टेस्टिंग कर ली, यार ये अगर राउटर खो गया तो क्या करेंगे, फायरवॉल हो गया तो क्या करेंगे। टेबल टॉप में बेसिकली थोड़ी सी सारी टीमें कंबाइन होकर करेंगी। एंड सिमुलेटेड अटैक्स इज द प्रैक्टिकल रेड टीम ब्लू टीम वर्जन, लेकिन इसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। विद दैट आई कंक्लूड दिस थिंग। थैंक यू वेरी मच। और अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज। Thank you, Manaf Saab. I have 2 questions. My first question is that you were saying that there are the rules or regulations in which the CEO is legally liable if any data breach occurs. What rules or regulations are Pakistani rules and regulations are Pakistan के कौन से इसमें mention कर रहे हैं? My second question is that basically I think the concept of cyber attack is changing, landscape is changing. The spear phishing attack is the most important thing, जिसके अंदर जो है वो हमारा internal जो है external email के through हमारा internal structure जो है वो expose हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि उसके अंदर कोई IT पर्सन इन्वॉल्व हो। हमारे यहाँ पे जो इवन ये कि हमारा कोई एडमिन का कोई भी पर्सनल या हमारा कोई भी किसी और लाइसेंसिंग का पर्सनल अगर ईमेल को वो खोलता है जो कि स्पीयर फिशिंग ईमेल होती है तो अटैक जनरेट हो जाता है। काइंडली इस सिनेरियो के बारे में जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जरूर जो है वो थोड़ी गाइडेंस दीजिए कि ऐसी सिचुएशन में हमारा वो पर्सन जो कि कोई IT गाय नहीं है, he is a simple administration person, he is a simple licensing person जो कि अपनी रूटीन के जो है वो मेल्स सेंड कर रहा होता है और रिसीव कर रहा होता है। इन टुडे अटैक और थ्रेट लैंडस्केप में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इस तरह के अटैक्स रोकने में उनकी क्या सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में तो मैं बता दूं कि जो प्राइवेसी का जो कानून पाकिस्तान का जो आ रहा है नया, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है जो है। मैंने खुद भी पढ़ी हुई है एंड इस पे अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है थोड़ा सा। आई थिंक वो कैबिनेट में भी आई थिंक अप्रूवल के लिए गया हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने ये पूरा एक लेजिस्लेशन निकाली थी जिसमें इवन यहाँ तक उस कानून के अंदर है कि आप अगर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दी हुई है तो उसको 15 दिन में नोटिस दूंगा कि आप अपने पास से वो इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दें, और वो लायबल होगा लीगली
अपने पास से वो इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन, इसके साथ साथ वो इशू भी आते हैं, बट जो नया प्राइवेसी का जो कानून जो इस वक्त बिल जो चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें ये चीज मौजूद है जो है। इसी तरह जो आपकी नेशनल सर्च जो मौजूद है उसमें भी ये रिकमेंडेशन गई हुई है कि जो है इसको सीईओ को जो है वो लायबल किया जाए। उसकी रीजन ये है सीईओ को लायबल करने की किसी भी ब्रीच या उसके लिए कि कई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ जो है वो सपोर्टेड जो है ना वो नहीं होती यहाँ पे। तो यानी कि सीईओ उतना सपोर्ट नहीं करता है, टॉप लेवल उस चीज को उतना सपोर्ट नहीं करती। जब सीईओ कह रहा है जी मुझे ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, और उसकी वजह से ब्रीच हो जाता है। हमें जो इस चीज के अंदर है वो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट हो चुका है उसमें ये मेजर एक रोल प्ले हुआ था कि उनके पास इनफ इक्विपमेंट्स नहीं थी या वो समझ नहीं पाए। दूसरा जो आपने स्पेयर फिशिंग की जो बात की है, देखें ये पूरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा एक अलग से आपको वेबिनार करवाना चाहिए। बट क्विकली मैं आपको 2-3 रिकमेंडेशन दे देता हूं जो आप लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चला सकते हैं। मैं एफपीसीसीआई की साइबर क्राइम कमेटी का जो है वो मेंबर भी हूं, और वहां से भी हम एक चीज करने की कोशिश करें। अगेन विद द नेप्रा हेल्प, आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन नेप्रा टू काइंडली कंसिडर इट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। एक चीज करें, देखें हम यहाँ पे आज बैठे हुए साइबर के लिए, हमारे ऊपर साइबर अटैक्स आते हैं, उनको रोकने के लिए हम बैठे, जिसमें स्फेयर फिशिंग एंड फ्यू अदर अटैक्स आर मोस्ट कॉमन वन। जिस तरह टेलीफोन के ऊपर जब हम कॉल करते हैं अलग अलग चीजों के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाती है, साइबर अटैक्स के बारे में भी कोई आगाही मुहिम चलाई जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन नेपरा किसी फोरम पे अगर आपकी काइंडली इस बात को उठा सकें कि सर जिस तरह के मुख्तलिफ आपकी जो लोगों को जो आगाही दी जाती है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो, चाहे वो डेंगू के हवाले से हो, इस तरह टेलीफोन की कॉलर टोन में ये चीज भी होनी चाहिए। सेकेंडली, आप सब लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंपल सा फॉर्म बना लें, गूगल पे एक फॉर्म बना दें, हर बंदा उस फॉर्म को फिल करे, उससे अंडरटेकिंग ले, उसमें आपकी एक साइबर सिक्योरिटी की आप एक गाइडलाइन बनाए जिसमें फिशिंग के बारे में भी कॉमन चीजें हों, उनसे हर महीने एक साइन लिया करें। देखिए हमारी कौम में बड़ी सॉरी बट हमें बड़े लेजी, यानी हमारे सामने आ जाएगा ना हम सीधा बोलेंगे जी ओके ठीक है डन, साइन करके दे देंगे, नहीं, उनको लायबल बनाया जाए। उनके कुछ टेस्ट आते हैं फिशिंग के या इस साइबर सिक्योरिटी के, बहुत कॉमन चीजों के वो टेस्ट लिए जाएं, और उनका जो आपका सालाना इंक्रीमेंट है या कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस बोनसेस है वो उसके साथ लिंक कर दी जाए कि वो टेस्ट पास करोगे तभी होगा। क्योंकि देखें एक मैं आपको बहुत एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ, चाहे वो फिशिंग से हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। एक जगह डार्क वेब के ऊपर मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला जब एक बहुत बड़ा हमारे कंट्री के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके पैरेलल में एक और जगह पे उसने पोस्टिंग की थी। मैंने वो पोस्टिंग उठाई, उसने हैकर ने क्लेम किया था कि इतने सारे पीसी, दैट वाज नॉट द केस दो। मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को कॉल की, मैंने कहा देखिए ये इस तरह की मेरे पास अपडेट है कि आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज है, कोई पीसी कॉम्प्रोमाइज है। पहले एज यूजुअल कुछ नहीं कहा, नहीं हमारे तो ये लगा हुआ ये लगा। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने उनको स्क्रीनशॉट एक दिया, मैंने कहा इज दिस योर पीसी, वन ऑफ योर पीसी? बोले हाँ है हमारा। मैंने कहा अब आप देख लेंगे आपकी इतनी सारी जो सिक्योरिटी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है डार्क वेब से आपका, तो मैंने कहा आप लोग कॉम्प्रोमाइज है, जस्ट चेक इट। आखिर में मुझे ये पता चल रहा है कि जी उनके जो एक डायरेक्टर साहब थे, उनके पीए की भी जो सेक्रेटरी या जो भी उनके अंडर थे, यानी 3rd या 4th लेवल, वो उसका पीसी था। खैर जो भी कवर अप है वो अपनी जगह। आया कैसे? टोरेंट उन्होंने डाउनलोड की, कोई उनको वीडियो देखनी थी, उस टोरेंट के साथ साथ जो है वो भी उसके साथ वो लॉन्च हो गया और आ गया, कंप्यूटर क्रैक हो गया। तो फिशिंग के लिए आपको ह्यूमन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट फिशिंग, हम इसको फिशिंग तक लिमिट नहीं करें। कॉमन सेंस जो साइबर की होती है, जो फिशिंग के अलावा भी जो हम टोरेंट डाउनलोड करते रहते हैं, हम कोई भी लिंक होता है उस पर क्लिक कर देते हैं, फेसबुक की हर चीज में कर देते हैं, फोन की हर ऐप हमें इंस्टॉल करनी होती है, इन सब के बारे में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कुछ प्रोग्राम बनाया जाए और उसको बनाने के बाद आप उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाएं। देखिए हम गवर्नमेंट लेवल पे शायद इतना कुछ ना कर सके, ठीक है, लेकिन आप सब लोग मिलके अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकते हैं जो इस चीज को जो है इन्फोर्स करवाए। फिर फिशिंग के मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ फिशिंग कैंपेन भेजी जाती हैं, हर एम्प्लॉय की ईमेल पे जाती है। वो अगर आप मैं नेपरा को ऑफर कर सकता हूँ इस टाइप की वन ऑफ द सर्विस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये रन करवाना चाहें एंटी फिशिंग का, तो वो सिंपली एक ईमेल भेजेगा, आपके सामने स्टैट्स आ जाएंगे जी किसने क्लिक किया किसने नहीं किया। दूसरी चीज, फिशिंग और जो आजकल हमारा बैंकिंग के जो फ्रॉड चल रहे हैं फोन पे, इजी पैसा के, किसी भी और चीज के,
दे बोथ आर मच लाइकली सिमिलर। वो आपकी माइंड से खेलते हैं, आपको इस तरह की चीजें देती हैं कि कभी कभार मुझ जैसा बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं, रादर मैं 90% आप समझ लें मैं कन्विंस हो जाता हूँ दिस इज अ लेजिटिमेट ईमेल। तो मैं यूजर को 100% ब्लेम नहीं करूंगा, इट डज हैपन। नाउ हाउ टू स्टॉप इट? आपका जो मेल की जो आप सर्विस लेते हैं किसी भी प्रोवाइडर से, स्पेसिफिकली देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो फिशिंग को ब्लॉक करती है। आपके स्पैम फिल्टरिंग में लिमिटेड फिशिंग की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं ऑब्वियसली दोज सर्विसेज कॉस्ट, उनके अंदर पे एडवांस फिशिंग के मैकेनिज्म होते हैं, वो फिर उसको ब्लॉक भी करके देती है। तो इफ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड इट, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दोज सर्विसेज ओवर हियर। बाकी ह्यूमन फैक्टर एलिमेंट हमेशा रहेगा, चाहे हम कितनी भी अपने तौर पे कोशिश कर लें, बेहतरी कर लें, इंसान को हम कभी नहीं रोक सकते। उसके लिए एक ही तरीका है कि हम मुसलसल उनको रिमाइंड करवाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू हियर। Thank you, Manav. Any question from online, our virtual participants? शुक्रिया। अब मैं दावत देती हूँ रजी फारूकी साहब को, जो के इलेक्ट्रिक में हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। आप आएं और आज के मौजू पे अपनी ब्रीफिंग दें। थैंक यू। Thank you. Can you guys hear me? Ji. Assalamu alaikum and thank you very much, everyone. I mean, Amar Jafri Sahab yahan par hain, and I was thinking, as Sir Isaac Newton have said, standing on the shoulders of giants. So Amar Jafri Sahab obviously have been a source of the first mover, first person who explored this opportunity back in the days when nobody was. So thank you, Marsa, for all that leadership. Again, thank you to NEPRA, and thank you to Kuratalan and all the other directors, as well as the staff, and particular thanks to Mr. Chairman for giving K Electric the opportunity to come and share our experiences over here and help the whole sector on the whole to move forward and strengthen cybersecurity in a combined fashion. अच्छा, also मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा interactive session हो जाए, तो please don't wait for a QA sort of session answer. Let's keep it lively. Whenever you have any questions, please Zoom pe hai, raise your hand, or ping or over here. So happy to sort of take that. So let's start it. So I am as Kuratalan just introduced, my name is Razi Faruqi. I am heading cybersecurity function at K Electric. K Electric, as you're aware, is the only vertically integrated power utility in Pakistan. We operate within generation, transmission, and distribution. K Electric have been an initiator in this area, and perhaps probably one of the more mature organizations in this area from practice perspective. So without much ado, let's get on with it. So agenda, what I'm hoping to cover today is let's quickly look at the problem. What is the problem? So we all are aware, as our respected colleagues here have highlighted, the growing cyber attacks on power infrastructure. Why do we care? Obviously, because it causes damage to human health and safety, national, regional, and other economies, national security. Power drives everything, and we are all aware of that, and the society as a whole. And what do we do about it? Prepare, invest, educate, contribute, all of this leading to continuous improvement. It's a moving goalpost. As much as we would like to say that we have reached a certain level of protection against cyber security, unfortunately, in today's world, that's still a sort of a goal, a phantom goal. It's a moving goalpost. There are new types of threats. There are new types of
attack vectors which are out there. And we all are aware of all that is happening. And we're going to talk about them a little bit in this presentation. And what is the ask? What should be done? So it asks sustained investment in human capital, tools, technologies, and processes. So unfortunately, it's not that there is a finite sort of a milestone and then that is it. It is a continuous, as I said, continuous moving goalpost. We're going to talk quickly about the challenges. I'll share KE journey, how we go about it, and perhaps quick recommendations for my esteemed colleagues here to get started on the cybersecurity journey, and then obviously the Q&A. Thank you. So, so why do we care? It is a growing problem. Sorry for the disturbance. I'm sorry? Sir, presentation is not moving. I think slides change. Sorry for the disturbance. Just wanted to highlight. Sure. Which slide is it on? Sir, still I'm at the first slide. It's cybersecurity and it's heading. So right. Okay. So can you hear now? Can you see it now? Yes, sir. It's fine now. Okay. Thank you. Thank you for highlighting that. So the growing problem, and why do we care? हमें क्यों परवाह? ये क्या problem है? So quickly, we're going to look at all those attacks. So there have been a continuous barrage of attacks. It's a relentless attack scenario. So there's nothing really where there is a break. So quickly, the major ones which are reported within the power sector globally in the last 11 months, so in the region, we all heard about Tata Power in India. I think the director here have also shared this incident yesterday on the PowerCert WhatsApp group. There was a cyber attack on critical servers and shut down their operations. And that's our region, that's our neighbor. Ukraine energy grid, we all know what is happening there. There have been initial attacks back in the year 2015, and then there are continuous attacks during the ongoing conflict. Delta Montrose Electric Association, they are the owners of Colorado Energy Company, and they had to shut down 90% of their infrastructure operations, causing rollouts in their target areas. Opel Electrobras, a Brazilian utility company, Opel Electrobras, got affected by ransomware. They had to pay an undisclosed amount because they didn't have any recourse to recovery. And then Volue ASA, spring 2022, Norwegian energy company was a target of, and so it continues. There's no respite. There's no break from this continuous barrage. So what does that mean? As I earlier said, sustained investment into human capital, technologies, tools, technologies, and processes. Next, please. So quick question which comes to mind is for a power utility, and let's focus on power utility because that's what the sector we are focusing on. What are the key elements? So here are a few key elements, and by no means this is an exhaustive list. This is just a very high level sort of summarized list. So it is essential that power utilities or whoever have to look at the risk profiling, readiness assessment. You see, you don't know where you're going unless you know where you've been. If you're not aware of what is your current posture, security posture, where are the gaps, you probably cannot have a meaningful direction to plug those gaps and raise the security posture. Executive advocacy. We have heard Jafi Saab also saying this. This is absolutely critical. By executive advocacy, I mean leadership and board level prioritization is essential. K Electric, I've been fortunate, my team have been fortunate because we have absolute advocacy from our leadership, all the way from CSU to the board. What are the key inputs? Regulatory compliance requirements, guidelines.
we all have been shared NEPRA guidelines. That could be a key input in terms of where do we want to go? Where are our gaps? What do we want to achieve? We could certainly use one of the global gap assessment tools, and we're going to talk about that a little bit more. That will provide us clarity on gaps. A quick international gap assessment tool comes to mind, C2M2. We're going to talk about that a little bit more. And national sectoral policies and best practices. So, for example, State Bank have its policies, cybersecurity policies. SECP is publishing its cybersecurity policies, as well as Munaf just mentioned, that the legal framework of Pakistan is also coming up with certain cybersecurity and privacy laws. Also, because we can talk about that a little bit more, because one of the questions which my esteemed colleague here, Kuratalan, asked was on the legalities, and it's interesting because we have a large population here in this country who are foreign nationals, dual nationals, and regulations like GDPR and US Privacy Act actually require that those organizations which retain that data should be compliant as well. So that could be so the demarcation is really fuzzy around there. Allocate budgets and resources. Cybersecurity is expensive business, nothing for free. And when they say something is for free, take it with a pinch of salt. Cybersecurity ROI is typically 3 years. That's what Carnegie Mellon University found out through few researches. I think as a practitioner, I think every time you stop a ransomware attack, your ROI is right there. Because think about the opportunity cost. If you haven't been able to detect and block an attack and the damage it may have caused, that's immeasurable. Forget the financials, the headline news, the reputation loss, that's irreparable. Development of cybersecurity roadmap, this is essential, this is foundational. Suggestion is, that we can focus on 3 to 5 year efforts, because typically the industry evolves and moves within 3 to 5 years. Adoption standards and frameworks, that is absolutely critical, because you see, we can all be having baseline of where to go and what to do, but compliance guidelines like NEPRAs and standards like ISO 27001 or NERC CIP could provide us and will provide us with measurable progress. And that measurable progress could tell us where we are, what we need to do to get certified. Identify and prioritize foundational security domains, again, driven by NEPRA, C2M2, NERC, etc. These domains essentially leads to potential projects and work streams. And then those have to be supported by appropriate governance models, security and technology governance models. And we're going to talk about that a little bit as well. Monitor your progress. Periodical risk profiling status dashboard. So, what we do is here in K Electric, we have regular periodical dashboards, as well as we have we revisit our gap assessment and see where the gaps are, at least semi-annually, if not more. That also ensures leadership oversight and board level visibility, because as I said, cybersecurity is not expensive, and they need to know where their investments and how that is protecting the power utility and its essential business of providing power. As I said, gentlemen and everybody, please feel free to ask questions wherever you feel. So enterprise cyber risk profiling, because and C2M2. So I thought it might be helpful to share C2M2. So C2MT stands for Cyber Security Capability Maturity Model. It is an outstanding free tool methodology, which is very simple. There are guidelines online, and which provides you with actual outputs, which are really very useful in terms of looking at where we are and where we need to go. So what is it? It is a set of
common cybersecurity practices across 10 domains. And we're going to look at those domains as well quickly. And those are all essential domains. It helps in evaluation, prioritization, and improvement of cybersecurity capabilities. Why use it? It enables organizations to capture the current state of cybersecurity program and track growth over time. So, and I think that's where the power is, because it not only provides us with a framework of capturing current state, it also provides us with the tools to monitor the progress, how we are moving forward in different domains, within the different domains. What does it cover? It covers both OT, operation technology, and IT systems. And who developed it? So it is actually developed by US Department of Energy and Department of Homeland Security under direction of White House. The first version was back in 2012. What does it cost? Information, templates, and resources are available for free over web. I've shared the link here as well. It's open globally. Anybody, any interested party, not only power utilities, anyone can go and get trainings, training materials, download templates, resources. It's an amazing source. The latest version is version 2.1, and it was launched just this summer, June 2022. C2M2, I think, provides our participants with a globally accepted industry tool, which we can adopt and which can help us drive our cybersecurity maturity journey. Next, please. And I thought it might be helpful if I share what, so when you go through C2M2, it will guide you to create certain questionnaires. And then those questionnaires are essentially sort of leads to workshops. So those workshops are held with stakeholders, and by stakeholder, I mean perhaps your OT, perhaps generation, perhaps your distribution, finance, enabling function, HR, and sort of try to capture all those verticals and see where they are. Those questionnaires, those templates, conducting those workshops actually provides you and provides the user with a profiling on where do they stand. And when you map that, so actually what you see here at the screen is one of the tools which C2M2 recommends, because if you look at it, and perhaps we can look at it a little deeper. So this is a cyber risk profile sample for a power utility. So on the green ones on the table, on the grid, it is the grid on the x-axis is the status, largely implemented, partially implemented, and not implemented. And there are no sort of, it's a very qualitative, that's the beauty of it, so they're not really sort of, complex formulas. There are guidelines, and what you feel along the guidelines, you can sort of, capture that. On the y-axis are the domains, so we just talk about C2M2 covers 10 domains. And if you look at the lower half bottom of the slide, there are those 10 domains. RM, risk management, ACM, asset change and configuration management, IAM, identity and access management, TVM, threat and vulnerability management, situational awareness, SA, ISC, information sharing and communications, IR, event and incident response, continuity of operations, EDM, supply chain and external dependencies management, workforce management, and cybersecurity program management. Now, I mean, please feel free to ask, but if you go down the website, it will show you. And these are pretty descriptive domains. It can provide you with an idea of what each domains look around. And the questionnaires and templates are around capture information around these 10 domains. So once the exercise is completed, such a grid is formed. So if you look at the grid,
we can see that for this particular power utility, largely in generation and transmission and distribution, GGT within the OT domain, it's not implemented. It's all on the red. Yellow, partially implemented. There was few things in distribution and transmission. And then largely implemented for this particular power utility, it is green within the IT setup. On the right side is the bar chart, which can provide a snapshot. And again, if you think about it, this is a very executive level dashboard, and it tells you where a power utility at any given point, So how we use it typically is we revisit and do it for every year. And that actually gives us input on what projects and what areas to focus on, what projects to budget for the upcoming years. So for example, so for this power utility risk profile on the right side, we can see that DGT have, 8, 9, 10, and 16 gaps not implemented. There are a few yellow ones, whereas in IT, there's a lot more. Only one area is not implemented, and that is EDM, which is supply chain external dependencies management. So as you could imagine, this automatically provides us with a rationale of where our investments, where the user investments need to focus, and where to leverage this. Because there are obviously limited budgets and limited resources. So where to optimize those resources to gain maximum opportune and benefit. This is one tool which could help it. Now, please, any questions? Feel free to ask any questions. Yes, if I can ask the question. My name is Asif Vyas from Digital Areas. Yes, Asif Saab. It is a very good dashboard that you've shown, and it has raised a question in my mind that you've got 4 domains: generation, transmission, distribution, and IT. No, sir. No, sir. 4 areas, not domains. The domains are 10 cybersecurity. Those are 4 verticals. Right. So out of these 4 verticals, what do you think for a power company like K Electric or some other organizations under NEPRA, where are the most of the threats? Because generation, transmission, and distribution is something which is not directly related to IT security. Those are related to OT security, perhaps. So do you think that most of the threats are in generation, transmission, and distribution, and there are less threats in IT? So, Asif Saab, I wish I could make a judgmental call on that, but I'm not sure if I can actually say where the threats are, because we see threats 360 degrees everywhere: IT, OT, personal, supply chain. Perhaps you're wondering where the gaps are. So I think, and this is exactly what the usage of this tool is, that using this tool rather than what perhaps I think or you think or anybody else think, the tool debiases our biases and provides a realistic, sort of a rational, structured approach in digging out where the gaps are. And then, so suppose I don't like investing in generation, but if I'm in this sample power utility, even if I don't like investing in generation, this tool is telling me you have to invest in OT. And naturally, as I just mentioned, the limited resources, whether those are financial or HR, have to now be prioritized towards that. So does that answer your question? Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you. Likewise, this is one of the sort of, tools which it provides in assessment. Another sort of, the other one is it also provides you with the capability and tools to draw out a cybersecurity roadmap.
Here on your screen, as you could see, there's a cybersecurity OT roadmap, which is derived for 3 years. On this, if you look closely, on the left axis, on the x-axis, on the left column are the domains. So the same domains which we just talked about: risk management, asset change configuration management, identity access management, and so on. And then on the right side of the slide, 3/4 of the slide, we have drawn out the different sort of, and again, these are the same language which we derive from C2M2. So C2M2 says within risk management, your steps should be, generic steps should be identify stakeholders, perform a risk assessment, manage cybersecurity risks, and then perform continuous cybersecurity risks. Within IAM, identity and access management, says identify stakeholders, review access management, who have access to what, monitor privilege access. We all know privilege access is the most sort of Achilles heel. Not managed well, privilege access could bring the organization, could actually disrupt normal business operations, and then periodically review it. Likewise, threat vulnerability management, it has some great sort of recommendations: identify stakeholders, review email and web browsing protections, establish continuous TVM program, review data protection, review wireless access controls, harden OT infrastructure, establish OEM and CERT partnerships for TVM intelligence. So as you can imagine, using C2M2, actually it uses the same language. It provides concrete guidelines on how and what areas to focus on and invest in, and what could be the sort of timelines and what actions to take during the timelines. And again, this becomes a very useful tool for executive visibility. Where is the incumbent of the power utility and its journey on cybersecurity maturity model? How mature are we? So perhaps from this perspective, 2 years down the road, we may go back and say, hey, we have actually, aligned our procurement process with cybersecurity requirements. But guess what? We haven't really done the TVM, and so on and so forth. Please next. Again, this is just a continuation of the same tool, because those were 5 domains. The earlier slide had 5 domains, and this one had 5 domains. And again, it's exactly the same. And if you think about it, the grid and this roadmap actually provides us with a very rationalized, almost structured tools where to focus on from a cybersecurity maturity posture model. Next, please. So having sort of covered those foundational elements, I thought perhaps it will be, and thank you, Korothalan, for giving us the opportunity. And thanks to the NEPRA and chairman, because they felt since we were one of the early starters, we were perhaps a little bit ahead in the game, and they thought it might be useful for all our partners to sort of benefit from our experiences. So here's a quick sort of high-level K Electric cybersecurity journey. So how did we go about it? So, and these are very high level, so obviously, as you can imagine, over the last 3.5, 4 years, a lot have happened. But so engage with external consultants to leverage global best practice. Big Four consulting. We have engaged with one of the Big Four consultants. There's not hard and fast rules. You can engage with any cybersecurity sort of, well-known outfit. But because about 3.5, 4 years back, there was not really much maturity in the local market, we thought it was probably best to leverage and build upon international or global expertise. They helped us with
developing an enterprise cybersecurity framework, and call it an organizational-wide umbrella policy, so you will, because that essentially provides an sort of a board level, executive level, leadership level sort of buy-in on, yes, now we have a cybersecurity practice and we are going to implement that. We carried out a C2M2 gap assessment, so no surprise there. I wasn't aware of C2M2 when we engaged that Big Four consulting. They brought in that tool, and I thought that was a great tool. It captured our risk profiles, both within OT and IT space. And it also sort of helped us in terms of, so C2M2 as gap assessment and telling us where to focus. But how do we measure independently? So I can say I'm C2M2, but how do I measure independently? And C2M2 is not a certification. No outside quality assurance entities would come in and sort of, it's a self-assessment tool. So it is always helpful, and they recommended that we scope out for some cybersecurity standard as well. We scoped out for ISO 27001 because we thought it was applicable. The local expertise were readily available, and it has global acceptance level as well. The best part about ISO 27001, the whole utility doesn't have to be ISO 27001. So, so for example, one of the, so what we did was we say, hey, we are going to start off with our only IT setup, automation setup. And since then, we expanded its footprint. So it allows that flexibility for organizations to do cherry picking on what they wish to do on ISO 27001. And then the third parties come in, and there is a whole cycle, 3-year cyclical recertification exercise as well. We established a case cert, Cyber Defense Command Center. We call it Cyber Defense Command Center. In the more traditional lingo is SOC. We engaged that Big Four consulting to provide us with a SOC playbook and SOC rule book. And as Amar Jafri Sahab, I think, was saying, that it's essential that there are playbooks and rule books, because then the teams would know what are the steps to take, and what are the sort of global best practices when there is an event of interest, quote unquote, or if there is a threat vector detected. And those were the foundations. And those foundations were used to establish. So we have a 24/7, 365 holistic cyber threat monitoring cert, case cert. And we're going to talk about that a little bit more as well later in the slide. We did separation of cybersecurity from IT organization. This is something perhaps NEPRA can also consider, but State Bank had given its regulations back in 2011 that cybersecurity have to report into risk management and cannot be under IT, because if you think about it, that's a conflict of interest by nature. So we did that. We carved it out from IT, and my reporting is to CRO. I'm going to show that. We did a footprint expansion within OT space, because as we are all more focused on OT. So what we did for the power plants and transmission, we enforced basic cyber hygiene. And by that, I mean, who is logging in, who is logging off? Let's have licensed software. Let's ensure we have licensed software. Let's ensure all our USBs blocked out. Let's assure that all those people who are accessing PLCs and HMIs and RTUs in transmission networks and generations are actually authorized, and that there is a sign-in, sign-off processes and procedures. Because you see, we are all starting from the basic granular. There may be different position or posture, but for us, it was pretty new. What we did was we have adopted, and we started off on OEM baseline security adoption for remote access and air gap. So we realized that we have
equipment from Allen Bradley, General Electric, Schneider, Siemens, and whatnot. And we said, hey, these are all global organizations. We reached out to them and said, please share your security best practices and baselines. And guess what? They were very happy to do that because that makes their life easier as well. And we started implementing, because if you think about it, we are transferring that risk rather than figuring out what we do. We are asking those providers, global providers, hey, share your OEM security baselines. We're going to implement those. And that provided us with a ready-made sort of, knowledge base. We reviewed contractual amendments. All power utilities have huge contracts, right? With all these generators and generation and transmission equipment distributors. And we said, let's do corrigendums and addendums to this, because a lot of them were signed up 5-year, 10-year back. Said, let's include cybersecurity sort of, incident response. So if something happens, GE, what are you going to do for us? Schneider, what are you going to do for us? We will do a lot of things, but what are we going to do for us? So we engaged with them to look into contractual amendments. We looked at OT roadmap, and then we have engaged with, we have gone through a whole procurement process. We engaged with Siemens and everybody. And finally, it was awarded to Schneider. So currently, Schneider is actually advising us on our strictly OT area: generation, transmission, distribution, risk profiling, and cyber risk posture. And then, least but not the most, cybersecurity awareness. Studies after studies after studies globally have shown us that no matter how strong your defenses are, no matter how much you invest in your technologies, your users eventually are bound to make some mistake, naive mistake, and that can compromise a lot of things. So we carry out simulated phishing campaigns, seminars, and training sessions. Quickly, KE-CERT, we have established the Cyber Defense Command Center. It is designed to plug and play to NEPRA Power Cert setup whenever that is ready. We have fully automated harvesting and sharing of IOCs from bespoke open source internal threat feeds. So we contribute to 2 commercial threat feeds, intelligence threat feeds, and we contribute and we subscribe to open source threat intelligence feeds. And then we subscribe to the vendor threat feeds like Fortinet and Cisco's, because they provide those threat feeds. So for example, and what is it based on? It is essentially based on, we are leveraging a NATO developed open source defense framework. Please go out, do it. It's called MISP. It's an open framework. NATO have provided that. And they said what it does, it allows indigenous ingestion of these compromised attack vectors. So for example, 2 weeks back, when there was a Sidewinder APT IOCs, it was reported, it came out, and boom, within few seconds, actually, all our firewalls, all our network defenses, all our endpoint were all updated with those hashes and IOCs, indicators. So if APT Sidewinder came to us, and on the average, there's like thousands, but we have to filter it. Yeah, and so on the average, about 200 to 300 IOCs and hash tables are added every day to these defenses. And it's all automated. Before it was manual, but after adoption of this NATO framework, it's all automated. And I would suggest perhaps NEPRA can look into that. It's a 24/7/365 non-stop security vigilance. It's an outsourced model. We do anomalies detection, system user traffic and entity behavior anomalies, and it complies with MITRE attack framework. Without getting into detail, there's a global MITRE, Carnegie Mellon University have programmed it, and it's called attack framework. So it complies with that. It's a first responder incident management. So the teams sitting there are investigating, triaging, and prioritizing detected potential incidents. The KPIs are actually based on mean time to resolve. So whatever is detected, what is the mean time? And we've defined the critical and the regular mean time for triage incidents. And then we have an in-house developed comprehensive incident managing and ticketing system, which calculates the MTTR and which tells us where any particular ticket or incident is. Threat risk assessment, again, an essential pillar for every power utility.
We carry out organization-wide threat risk assessments on all critical digital assets. We have our own in-house red team, and we have external accesses as well. We carry out KE-wide threat vulnerability management program. It's a monthly scan of all our digital assets. Everything is reported, and then it is, and then working with IT and OT partners, we actually start patching them as well. So there's a monthly cadence on that. We do end-to-end penetration testing cadence that includes on-net, off-net, code scanning, and web recon. So KE Live, KE website, it's all behind multiple layers of protection, and we carry out continuous red team assessments on those. We provide our, based on, because of our leadership support, it is now standard practice that all third-party solutions, integrations, clouds, payment systems, API integrations, everything has to go through our security phase gate review, and that carries out threat penetration testing, vulnerability assessments, as well as walkthroughs. And then all of this actually feeds into our enterprise risk management. So we have our enterprise risk management, which is at the higher level because I report into Chief Risk Officer. And over there, the risk management processes are there, such as risk acceptance, compensatory controls, and risk tracking. Here's just a quick sort of, sharing what could be a possible sort of, organizational structure. So I report into CRO, and then we have 4 broad pillars: security engineering transformation, cyber defense, SecOps and threat management, cyber resilience. And mind you, each of these pillars have further 2 broad pillars, IT and OT. So we are focused on all of that. This is just one way of, organizing it. And again, this is the org structure is again based on SBP guidelines as well as ISO 27001, because ISO 27001 also tells how to sort of, set up the org structure. Defense in depth model, this is just a quick sort of, so I thought it will be a very helpful because this is the whole technology stack. So if you think about it, we have systems, the blue boxes in the middle are our systems, OT systems and OT applications. And then north, east, west, south, there are multiple layers, defense in depth, all the tools and technology. So for example, on the right side, you see threat risk management. We do vulnerability scanning, we do penetration testing, we do network configuration assessments, external assessments, so on. On the south side, you can see we have web application firewall, network detection and retention. And mind you, guess what? All of this feeds into the left pillar, which is the SIEM, our KE cert, SIEM SOC. And that's where all the alerts are being generated, and where the fresh pair of eyes every 6 hours, 24/67 are looking into it. Next. So what are the key challenges? The key challenges are acquisition, retention, skilled human capital. That is our biggest challenge. Whenever we have somebody trained, they go to Middle East. Cybersecurity awareness is a continuous challenge. Continuous upskilling of cyber staff, even those who are staying, we have to upskill them. And continuous investment in human capital tools, technologies, and processes. So quickly, I know I only have 2 minutes. So wondering where to start? Here's our suggestions. Conduct gap assessment. Utilize C2M2 NEPRA guidelines on crown jewels. Aim for MIL1. That's maturity level 1. That's the lowest one. Prioritize engaging executive leadership. Solicit their advocacy. Establish cybersecurity governance. Security policies and SOPs, sign-offs, leverage existing knowledge base, because everything have to be policy driven. And then on the OT side, clarify your scope. Scope should be generation plans, transmission setups, distribution spread, smart grids, smart meters, supply chains, and billing. Leverage global cybersecurity assessment methodologies. We are leveraging Schneider. That helps to leapfrog to comply with current OT security thought leadership. That also helps us in soliciting OEM vendor cybersecurity baselines, planning for deployment. And then our suggestion scope should at least include foundational security elements such as air gaps, remote access, PLCs, HMIs, SCADA, and ICS systems. Likewise, end users are the biggest weakness. Establish simulated phishing attack cadence and security awareness. End-to-end server infrastructure, licensed software only, please. Open source is good, but only from industry leaders like Red Hat or Ubuntu or Canonical. Antivirus, anti-malware, any Gartner product would do.
block USB port access, no exceptions. We all know what happened with Stuxnet. You've just seen even my USB is not open. My CEO says, do not open my USB, even if I tell you to. Adopt hardening, CIS hardening guidelines. These are guidelines. Again, these are free. Adopt these guidelines. Our servers are hardened, our endpoints are hardened, harden those lines, because a lot of these vulnerabilities exploit those weaknesses. Establish identity access management practice. RBAC, role-based access control. Who have access to what? So why would Razi need access to financial systems? Or why would I need access to generation system? Role-based access controls. MFA, multi-factor authentication. Gartner says this is the biggest protection against ransomware attack, because unless you agree on the token on your cell phone, you're not allowed access. PAM, privilege access management, establish that. Root, power, admin are the most powerful ones. Those are abused and those cause all the havoc. PAM will provide you with control on that. Build threat vulnerability program, internal versus external. It depends on the choices. You can have internal teams, you can engage external ones. You know, monthly scans on your IT and OT crown jewels, track and patch critical high rated risks. No exceptions, because one missed patching and boom, you could end up paying heavily. Roll out encryption. Encryption is essential. Microsoft has free BitLocker encryption. Red Hat has free encryption. Communications, TLS 1.2, free. Network security. Please look at firewalls. Segmentation is important. Zoning is important. Even though you have firewalls and all those things, because the design is not right, person sitting in generation can access servers in transmission, and that should not happen. Protect your public-facing assets. Acquire web application firewall. That's absolutely essential to protect against OWASP top 10. For example, just to share, K Electric faces almost 500,000 attacks on our public-facing websites. OWASP, this web protects that. And that's about it. I'm just a minute over, so my apologies, but here's it. Thank you, sir. शुक्रिया। ऑडियंस में से या वर्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स के अगर किसी के सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, प्लीज गो अहेड। रजी साहब, दिस इज औरंगजेब from Allied Engineering Head Office Karachi, working as a technical auditor. First of all, thank you. आपकी प्रेजेंटेशन काफी फ्रूटफुल थी, जिसमें काफी सारी चीजें हमें पता चली। मेरा आपसे सिर्फ एक ये सवाल है कि एक तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने बताया, और आजकल काफी जगह मतलब दूसरे ममालिक में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, तो मुझे कुछ बताएंगे कि इस पे हम लोग कब काम स्टार्ट करेंगे? So essentially, I'm sorry, what was your good name? Mohammad Aurangzeb. So Aurangzeb, good question. I think you have probably seen initially at the beginning of our session, Amar Jafri Saab's presentation. I think he talked fantastic on cyber threat intelligence. From a key perspective, as I just mentioned, our Cyber Defense Command Center subscribed to 2 open source and 2 commercial products. And those cyber threat intelligence actually automatically updates all of our defenses, all of our tools. That's what we are doing. Now, if you're talking about researching and picking up threat hunting, that's a whole different story. We do not have right now, as in KE, the capability to do research and do cyber threat hunting. And hence, that is why we leverage global intelligence feeds, because whatever is being released, for example, GB1 and CrowdStrike and FireEye, they all have these, and quite a few of those are free. So we would, why reinvent the wheel? Leverage whatever is available. Perhaps that is a higher level of maturity once we have built up our foundational security posture. Yeah. Okay, sir. Thank you. Let me add one thing. Razi Farooqi Saab mentioned that State Bank of Pakistan has issued guideline wherein the IT and the cyber security departments are separated. Let me add that according to the NEPRA IT and OT regulations, it is clearly mentioned in our regulation that you need a separate
CISO and a full complete setup of cyber security, which does not necessarily be the same as your IT setups, because the focus is also on that. When we talk about our operational technology assets, maybe the simple IT team is not well related to that area. So CISO can be your, especially in case of our licenses generation, transmission, and distribution, where the assets are more towards the operational technology. They need to definitely separate their cyber security or OT certs from the IT certs. That's a great point. Thank you. Yes. अब मैं चेयरमैन नेप्रा से गुजारिश करूंगी कि वो आज की तकरीब के क्लोजिंग रिमार्क्स और स्पीकर में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए तशरीफ लाएं। थैंक यू। पहले इधर आओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी टीम कुरतुलैन, आप और आप सब लोग होस्ट, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब लोग जो यहाँ स्पीकर्स थे, स्पेशली हमारे रजी साहब जो कराची से तशरीफ़ लाए, अम्मार जाफरी साहब, एज यूजुअल आपकी सपोर्ट इज़ ऑलवेज invaluable for NEPRA for hosting such seminars and disseminating the information and taking power sector to its logical conclusion, which is to embrace cybersecurity. What is the right word? Protection against any potential attacks, because we all have come closer. As we say, this is a global village. It's not only the communication, the distances not have literally reduced, but it is the telecommunication which has brought us closer. But with the advent of technology, we are more vulnerable, and so is power sector. Previously, we used to have the old technology, but now every damn thing is extremely automated, technology based, highly IT oriented. So that makes every single product that we are using highly vulnerable and almost becoming a point of failure. चाहे वो आपके हाथ में फोन हो या कोई भी, अभी इवन आप अगर ईवी चला रहे हैं, तो ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आपको एक्सपोजर दे रहे हैं। तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काइंड ऑफ मैच्योरिटी। जैसे हमारी जिंदगी के डिफरेंट फेजेस होते हैं। बचपन में आपसे एक्सपेक्टेशंस और होती हैं, जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं, एडोलेसेंस की तरफ आते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। फिर जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। फिर जब आप मैरिड हो जाते हैं और यू बिकेम पेरेंट्स, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल और होती हैं। वही इंसान डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट अपने लाइफ के साइकिल में, उससे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट होती चली जाती हैं। और तो यही एग्जैक्टली चीज़ है कि हम भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट के एक साइकिल में हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं, बट उन्हीं की स्ट्रेंथ्स भी हैं, उन्हीं की वीकनेसेस भी हैं। इन सब को हमें लेके साथ चलना है। आज जहाँ से अपना अपना सफ़र शुरू किया था, केव से या स्टोन एज से, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से सुपीरियर चीज़ तो कोई भी नहीं है। कल भी हमारे यहाँ पे एक सेमिनार था, तो बात हो रही थी कि जो अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, हालांकि जो फरिश्ते हैं वो डे इन डे आउट इबादत में लगे हैं, लेकिन हमारी इबादत सिर्फ मुसल्ले पे नहीं होती, हमारी इबादत हमारे काम में भी होती है। तो अम्मार जाफरी साहब से मेरी मुलाकात हुई अबाउट लास्ट ईयर, और तब से हमारा बड़ा एक अच्छा एक दोस्ती का रिश्ता भी और एक वर्किंग रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया है। और साथ साथ हम मिल के पावर सेक्टर को भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग, पहले तो नेपरा का रोल ये है कि NEPRA being the power regulatory authority of Pakistan, like any other regulators, we are not probably the most modern, most advanced organizations that I can claim, लेकिन हमारे पास एक क्लाउड होता है, हमारा एक
फादरली फिगर जैसे होते हैं हम लोग, वो हमारा रुतबा होता है इंडस्ट्री में। तो ये हमारा काम होता है ना, हम बिजली बना रहे हैं, ना हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ना हम जनरेट कर रहे हैं, ना ट्रांसमिट कर रहे हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट सो वी हैव लॉट ऑफ थिंकिंग टाइम हियर। तो हमने इस इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जाना है, वो विजन हमने देनी है। और उस विजन में जब हमने मल्टी बिलियन डॉलर्स के एसेट्स लगवाए हैं यहाँ पे, और इस कॉम ने अपना पेट काट के ये एसेट्स लगाए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन जो है वो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल काम है। क्योंकि किसी चीज को लगा देना, बना लेना तो एक चीज होती है, उसको मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव फर्दर आगे करना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे हमने पावर विद प्रॉस्पेरिटी शुरू किया था, तो जब वो पहला इनिशिएटिव नेपरा का था तो लोग बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल थे और मुझे कहते थे कि जी ये पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन 2 साल में हमने मोस्ट स्टैगरिंग रिजल्ट्स देखे हैं कि तकरीबन 33 बिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग हुई है हमारे लाइसेंसीज की तरफ से। वी कुड बी एबल टू जनरेट मोर देन 34,000 जॉब, जो कि अभी तो लेटेस्ट नंबर 45,000 जॉब्स का है, जिसमें तकरीबन 9,000 जॉब्स हमने खवातीन की क्रिएट की हैं। तो ये इट इज़ नो लेस देन अ मिरेकल कि कहाँ आपको ये लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा। अभी इंशाल्लाह 16 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड CSR अवार्ड्स कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह उसमें जब आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त काम किया है, और ये वो काम है जिसमें कि हमने अगर देखा जाए तो कोई ऐसी खास जिद्दत नहीं की, ना हमने कोई एडिशनल बहुत कोई स्टाफ रखा, ना कुछ। बस इतना सा किया कि हमने अपने लाइसेंसीज को एक प्लेटफॉर्म दिया और उनको ये बताया कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, नेपरा आपको ज़बरदस्त अप्रिशिएट करेगा और आपको एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसमें आप सोच भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है। तो इसी तरह आई एम क्वाइट श्योर कि अभी हमने रेगुलेशंस बनाई हैं इसकी, जबकि पावर विद प्रॉस्पेरिटी में तो रेगुलेशंस भी नहीं बनाई थी, खाली गाइडलाइंस बनाई थी, वेरी सॉफ्ट रेगुलेटरी टच था उसमें। तो रेगुलेशंस तो दे आर लिटिल बिट मच, बल्कि मच मोर सीरियस देन गाइडलाइंस। तो और जितनी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो साथी हैं, हमारे लाइसेंसीज, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जी। ऑलरेडी आई एम क्वाइट श्योर कि दे मस्ट बी वर्किंग अ लॉट। जैसे अभी केई का हमें पता चला जो इतने इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हुए हैं, और वैसे भी हमें मीडिया से खबरें आती रहती हैं कि इनका डाटा हैक हो गया। तो आई एम क्वाइट श्योर कि दे मस्ट ऑलरेडी बी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो नेपरा अब पहली दफ़ा अपने लाइसेंसीज से उनको एक सिस्टमैटिक अंदाज में उनसे पूछ रहा है, उनको बता रहा है कि भाई आपने ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं इसके खिलाफ अपना एक पूरा प्रोटेक्शन का एक पैराफर्नेलिया खड़ा करना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो पूरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अगर एक अटैक किसी एक प्लांट पे होता है तो मोरलेस वही अटैक जो है वो रेप्लिकेट होगा बाकी प्लांट्स पे। तो अगर हम उसको एक जगह कॉम्बैट कर लेंगे और अगर एक जगह बता देंगे उसको, तो किसी प्लांट को, तो वो सब लोग उसको उसकी प्रोटेक्शन कर लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले नेपरा में सर्ट बना रहे हैं। हमने तकरीबन नेपरा की सर्ट फाइनलाइज कर ली है। इंशाल्लाह टारगेट हमारा 31 दिसंबर से पहले पहले हम अपनी सर्ट अनाउंस कर देंगे। साथ ही जो रेगुलेशंस में हमने 31 दिसंबर दिया था अपने लाइसेंसीज को, अब हम उनको ज़रा पूछेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया, हमें बताएं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि उनको 31 मार्च तक दे के फर्दर KPIs दे के और फिर इनकी रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, और सेकंड स्टेज पे हम इनका ऑडिट शुरू करवाते हैं। हम अमार साहब से मेरी बात हुई थी, और भी 2-3 कैपर्स का क्या नाम है, कैस्पर्स की जो है वो दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। अभी वो KE में आपके से आके मिलेंगे भी। उनको मैंने ये टारगेट दिया है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम कोई एक प्लांट उनको दे दें, ताकि मॉडल एक वो प्लांट लेके उसको वो प्रोटेक्ट करें, और ताकि हमें ये पता चले कि उनका जो प्रोटेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, रैशनल क्या है, उनके पास कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, और किस तरह का काम वो कर सकते हैं। और उनसे जो बात चल रही है उसमें ये भी हो सकता है कि हम सेंट्रलाइज एक सिस्टम नेपरा में लगा दें, और हमारे जितने लाइसेंसीज हैं वो उसके साथ हुकअप हो जाएं, ताकि हम पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेक्टिव जो है वो एक जाल बिछा दें पूरे पाकिस्तान में। तो बहरहाल वो अभी इनिशियल स्टेज पे है। इंशाल्लाह हम वो थोड़ा सा उनकी कैपेबिलिटी को देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं बात को। तो नेपरा की सर्ट बन रही है जी, फिर पावर सर्ट इंशाल्लाह
उसके लिए हमने कुछ नाम जो है वो कुरैतुल ने इकट्ठे किए हैं। उनमें से 2 लोगों से मेरी बात हो गई है, दे आर वेरी अपबीट अबाउट इट। तो हम इंशाल्लाह 5-7 नामों के साथ इसको शुरू कर देंगे, एंड एज वी ग्रो इंशाल्लाह फिर और भी लोग हमारे साथ कारवां बनता जाएगा। तो ये हम इंतज़ार कर रहे थे कि आईटी मिनिस्ट्री शायद ये करेगी काम, या कोई सेंट्रल पाकिस्तान का सर्ट बनेगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो हमने वी हैव टेकन आवर फेट इन आवर ओन हैंड्स। हमने कहा कि एनफ इज एनफ। तो हमारे ये जो एसेट्स हैं इनको हम मजीद रिस्क पे नहीं छोड़ सकते। तो मेरी अपनी सारे मुझे नहीं पता कितने लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं, 85 लोग। तो कम से कम आई एक्सपेक्ट के हमारे जो लाइसेंसीज की कुछ ना कुछ तो यहाँ पे तादाद है। आप काइंडली अपनी मैनेजमेंट को मेरा ये वाजे एक पैगाम दे दें कि जैसे नेपरा इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट पावर विद प्रॉस्पेरिटी, पावर विद सेफ्टी, इसी तरह नेपरा जो है ये पावर विद सिक्योरिटी पे उससे भी ज्यादा सीरियसनेस है हमारी। इसीलिए हम हार्डकोर रेगुलेशंस लेके आए हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये इट इज नॉट गुड टू हैव, दिस इज मैंडेटरी, ये मस्ट हैव हमारे लिए। क्योंकि या तो हम एसेट्स लगाते ना, अब ये नहीं हो सकता कि उन एसेट्स को हम जो है वो बिल्कुल ओपन छोड़ दें और जिसका दिल चाहे आके उनको वो टिंकरिंग करें उनके साथ। तो उसका एक ही तरीका है कि हम ऑर्गेनाइज हों और विजिलेंट हो। अभी आपने देखा ह्यूमन ब्रेन की पावर, कोविड आया, कोविड फैला, 120 कंपनीज ने उसकी वैक्सीन जिंदगी में पहली दफा बनाई, उस पर रिसर्च की, फिर वो उन्होंने उसको लॉन्च किया, पूरी इंसानियत को जहाँ जहाँ वो जा सकते थे वो लगी, और वो उसको एज अ ह्यूमन ब्रेन की पावर से हमने उसको कॉम्बैट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में तो कम अज़ कम इट इज़ एज गुड एज नॉट इवन देयर। बहुत अगर है भी तो बड़े माइनर किस्म के केसेस हैं। चाइना में थोड़ा सुना है कि शायद फिर, लेकिन पॉइंट ये है कि जब इंसान मिल बैठता है और अपनी ब्रेन पावर को यूज करता है तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। वो कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ताला हमें वो शऊर देता है जिससे कि हमें इस दुनिया में उसने भेजा, और ये हो नहीं सकता। हम लोग बाज़ लोग इसको एक शॉर्टकट लगा के उनकी शायद ख्याल होता है कि हम सीधा जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन इस दुनिया को अच्छा बनाने के बगैर हम इस टेस्ट में पास हुए बगैर हम मेरा नहीं ख्याल कि उस टेस्ट को पास कर सकेंगे। तो इस अपने जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे काम दिया है हम उसको बेहतरीन अंदाज में करें। तो जी वंस अगेन अम्मार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सॉरी, मुझे सुबह नैब में बुला लिया। जनरली तो वो बुलाते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, लेकिन मुझे एक सेमिनार से खिताब के लिए बुला दिया, और बड़े ज़िंदगी में मेरी पहली एंट्री थी नैब के ऑफिस, हेड ऑफिस में, और बड़ी इज्जत और इकराम से उन्होंने बिठाया और वापस भी आने दिया। और तो इसलिए मेरा सुबह का सेशन थोड़ा सा 15 मिनट में लेट हो गया था। लेकिन कोई ख़ास बात आज की अम्मार साहब वुड यू लाइक टू शेयर? अम्मार साहब मेरे ख्याल में किसी दूसरे सेमिनार में चले गए हैं, वो थोक के हिसाब से सेमिनार करते हैं एक दिन में। हाँ वो एंटी करप्शन डे है ना आज, आपको पता है जितने करप्ट लोग हैं वो आज मिलके एंटी करप्शन का डे सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने कितने अपने दौलत अमास की। चलें जी, विद दिस मैं आई क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच अगेन टीम, और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस जर्नी। और अगेन आप केई को भी जी मैसेज दे दीजिएगा और आप बाकी लोगों को भी कि टाइम हैज़ कम, अभी लेट्स टाइटन आवर बेल्ट्स और इसको साइबर सिक्योरिटी को बड़ा सीरियसली लें, और लेट्स पुट आवर हाउसेज इन ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि ये स्क्रीन खोल दें, स्क्रीन खोल दें। हमारे साथ फॉर्मली सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन बहरहाल आपके लिए हम दोबारा खोल देते हैं। जी बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूँ, मुझे कहा गया है देने के लिए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूँ। इसमें गुजारिश सिर्फ ये है कि आज के सेशन में जो भी गुफ्तगू सर्च पे हुई हैं, सर्वर के हवाले से बात हुई हैं, इसके ऊपर डिटेल मीटिंग हम इंशाल्लाह जल्दी करेंगे इसके ऊपर। और सिर्फ इतनी गुजारिश ये इसके ऊपर कि ये जो इशू है बहुत अहम है। इस वक्त मैं एक और वेबिनार में हूँ जो कि एंटी करप्शन डे में मनाई जा रही है, वहाँ भी ये डिस्कस इशू हो रहे हैं कि साइबर थ्रेट्स बहुत होंगे आने वाले दिनों के अंदर। तमाम मुजरिम जो हैं वो साइबर की तरफ जा रहे हैं
क्योंकि आपका जो इदारा है नेपरा वो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए बहुत बढ़िया है। और मेरी तरफ से हर किस्म की खिदमत जो है वो अवेलेबल रहेगी। आप सब वही कहना चाहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है अमर साहब, हम कंक्लूड करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच जी।